संगम है जहां नीति, अनुभव और भविष्य एक साथ आते हैं. Today's conversation will focus on governance reforms, infrastructure growth, investment climate, jobs, innovation, social development, and how Uttar Pradesh is positioning itself as a key contributor to India's growth story. And to everyone watching us live, yes, we are being streamed across the Times of India website, TOI app, and our social media handles. और आज जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो प्लीज़ हैशटैग को फॉलो ज़रूर करें, हैशटैग TOI Transformation Dialogues. So to formally open UP Transformation Dialogues, we begin with an address from a leader who plays a pivotal role in shaping times of India's business and digital growth. It is my privilege to invite Mr. Praveen Kumar, who's a resident editor at Times of India, Lucknow, to share his opening remarks and set the context for today's dialogues. May I please request Mr. Praveen Kumar to please join us on stage. Can we have a huge round of applause for Mr. Praveen Kumar? Thank you, sir. Namaskar. Welcome to TOI Dialogues. Welcome to the city of Lucknow. Former Chief Secretary and the CEO of the State Transformation Commission, Manoj Singh Ji, Advisor to the CM, Sri Avnish Awasthi Ji, renowned panelists, experts, guests, colleagues from TOI family and friends. This is the first TOI dialogue this year on the transformation of Uttar Pradesh. With the next assembly elections barely a year ahead, it's just the right time to start this conversation. We have assembled here just 2 days after Finance Minister Suresh Khanna tabled UP's biggest budget of more than rupees 9 lakh crore. The theme of the budget, नवनिर्माण के 9 वर्ष or 9 years of reconstruction, showcased the transformation we are going to discuss here. The GDP has more than doubled in the past 8 years to touch rupees 30 lakh crore. And the target is to take it to rupees 36 lakh crore by the next fiscal. And this has happened despite 2 years of COVID that gutted the economy. After 2022, when the pandemic subsided, the state's GDP has grown at the rate of an average 14%. Two recent quotes from our governor and the chief minister respectively summarizes this transformation. Speaking at the joint session of UP Assembly, Governor Anandibel Patel ji said early this week that Uttar Pradesh has transformed into a breakthrough state from a bottleneck state. This was her way of summarizing the 9 years of Yogi Adityanath government. 2 days later, addressing the post-budget press conference, Chief Minister Yogi Adityanath said that the state successfully transformed its perception over the past 9 years, emerging from policy paralysis to emerge as a land of unlimited potential. So, along with tangible changes we have been witnessing in the past decade, the most significant is the change in the perception about the state. Being in media, we have witnessed this change from very close quarters. Barely 10 years ago, any report written by us about UP's development
would evoke incredulous grace. And these reports would be taken with a pinch of salt by our own fraternity in Delhi and Mumbai. This is no longer the case. Be it UP being expressway capital of India or emerging as a defense production hub, or a favored destination for a hoping 122 crore domestic tourists, we have narrated all these stories and many such cases with authority. Uttar Pradesh is no longer a Bimaru state, but a strong economy and among the top 3 in the country. It's no longer just a potential, a story of potentials, it's a story of execution. But the climb is steep from here. The Chief Minister himself raised the bar while presenting Vision 2047 in August last year. In the 100th year of India's independence, UP has targeted to become a $6 trillion economy and raise its share in India's GDP to 20% from the present, a little over 9%. But the first goal is to achieve the $1 trillion mark by 2030. That means we have to grow from the present rupees 30 lakh crore to 90 lakh crore in next 5 years. Our UP transformation dialogues are designed as a thinking platform to collect all stakeholders on a same forum to brainstorm over the best ways forward. Today, we have gathered to explore this evolution, the challenges and future roadmap. Our dialogue is not just a ceremonial event. It does not focus on optics, it focuses on outcomes. So over the next few hours, we will hear from experts, policymakers, and industry leaders for their ideas and discuss how UP can leverage its strength to achieve the high goals it has set for itself. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. And with your words, we can see Uttar Pradesh बदल रहा है सपनों की हकीकत में. And now, I would like to invite, it is my privilege to invite Mr. Manoj Kumar Singh, who is a CEO, State Transformation Commission, Uttar Pradesh. Sir, can we please have you on stage? Give a huge round of applause. And I would like to invite Mr. Praveen Kumar once again, who is a resident editor of TOI Lucknow. And it is my privilege to invite Mr. Prasad Sanyal, who is a group business head, TOI Digital, What's Short, and India Times. Give a huge round of applause. And it is a time to felicitate Mr. Manoj Kumar Singh. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. I think बजट में GST पर कोई टैक्स, वो आपकी तालियों पर कोई टैक्स नहीं है. It's a beautiful moment. Give a huge round of applause. Thank you so much, sir. You can have your seats. And Mr. Manoj, I want you to stay on stage because it is the time for keynotes. So our next segment is the keynote address, where we hear a leadership perspective on the vision, execution, and impact driving Uttar Pradesh transformation. This address will explore how Uttar Pradesh is moving from intent-driven governance to outcome-driven governance, aligning its growth journey with Viksit Bharat at the rate 2047. Sir, the stage is all yours. Thank you. नमस्कार, प्रवीर जी
Honorable Awasthi ji, advisors to the Chief Minister, respected guests. मैं इस ओकेजन पर अपनी बात पहले 3 चरणों में करूँगा। यूपी ने पिछले 8 साल में जो हासिल किए हैं उसके बारे में कुछ बताऊँगा। दुनिया में जो 3 बहुत बड़े यानी मेगा ट्रेंड्स शिफ्ट हुए हैं या हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर बहुत बड़े यानी बिग टिकट इंटरवेंशंस जो इस बजट में सरकार ने किए हैं उसके बारे में बात करूंगा। साथियों, लीडरशिप का क्या इम्पोर्टेंस होता है ये यूपी से बेहतर कोई और स्टेट एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जो एक विजनरी, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड लीडरशिप माननीय मुख्यमंत्री जी का मिला है, उसकी वजह से कई क्षेत्रों में जो सुधार हुए हैं वो बगैर किसी डिपार्टमेंट के किसी स्पेशल या स्पेसिफिक इनिशिएटिव या रिफॉर्म के हुए हैं। वो सिर्फ परसेप्शन, लोगों के मोटिवेशन को, लोगों के एस्पिरेशन को अपने आप बदल देता है, और वो एक बहुत बड़ा कारण है जो आज की तारीख में यूपी के 24 करोड़ लोग एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8-9 सालों में प्रवीर जी ने आपके सामने रखा, ये एकमात्र स्टेट है यूपी जिसने अपने बजट को 3 गुना किया है। 3 लाख करोड़ से 9,12,000 करोड़ पे लाया है। अपने पर कैपिटा इनकम को भी 2 गुना से अधिक बढ़ाया है। 2017 में ये $600 हुआ करता था, अभी लगभग ये $1,300 है। और स्टेट की जीडीपी भी 17 लाख करोड़ से बढ़कर और ये 30 लाख करोड़ के आसपास पहुंची है। ये तब हुआ है, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बीच में लगभग 4 करोड़ की नई आबादी भी जुड़ी है। हम लोग आज की तारीख में पूरे देश के 55% से अधिक एक्सप्रेसवे यूपी में है, और गंगा एक्सप्रेसवे जो फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगा, इसके लोकार्पण होने के बाद लगभग 62% देश का एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर करता है, यूएसए में भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसीलिए इसको उन्होंने टैरिफ से बाहर रखा है। इसमें एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस बीच डेवलप हुआ है, और आज की तारीख में देश में जितने भी मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं उसके 55% मोबाइल फ़ोन यूपी में बन रहे हैं, और जो मोबाइल के कंपोनेंट हैं वो लगभग 60% कंपोनेंट यूपी के अंदर बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी तेज़ी से दखल बढ़ रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर में भी 4-5 इंडस्ट्रीज़ कमीशन हो चुकी हैं, और लगभग 60 इंडस्ट्रीज़ को लैंड अलॉट किया गया है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये डिफेंस का है। अगर आप पूरे इंडस्ट्री सेक्टर को देखें तो उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के जो इंडेंट मिले थे, उसमें से उस इंटेंट के सापेक्ष लगभग 20 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पे आ चुके हैं, और उसके सापेक्ष इंडस्ट्रीज़ अपना काम शुरू कर चुकी हैं। साथियों, इस विषय पे एक और बात कहना चाहूँगा मैं, वो एग्रीकल्चर के संबंध में है। सभी कंट्रीज़ अपने स्ट्रेंथ को फोकस में रखकर काम करती हैं, तभी वो आगे चल सकते हैं। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं और ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द प्रॉब्लम में आने वाले हैं। यूपी का स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है। हम लोगों को इन 2 चीज़ों पे बिल्कुल फोकस रखना चाहिए। एग्रीकल्चर के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को कहता हूँ और यहाँ भी रिपीट करूँगा कि यूपी एग्रीकल्चर के लिए जैसा इकोसिस्टम इनको मिला हुआ यूपी को, ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं है। वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर होती है वो 10% लैंड मास पे एग्रीकल्चर होता है, यानी दुनिया में जो पृथ्वी है उसके सिर्फ 10% हिस्से पे खेती होती है। बाकी या तो वो जंगल के नीचे है, बर्फ़ के नीचे है, या पहाड़ है, या रेगिस्तान है।
भारत में ये आंकड़ा 45% है। भारत में 45% हिस्से पे खेती होती है। यूपी में ये आंकड़ा 75% है। खेती में सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट इरिगेशन होता है। ये कहा जाता है कि अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन में सिंचाई की सुविधा पैदा कर दी तो एक परिवार को आप गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। दुनिया में जो खेती हो रही है उसमें 21% खेती एशोर्ड इरिगेशन के अधीन है। इंडिया में ये 55% है और यूपी में जो खेती हो रही है उसमें 86% खेती अंडर एशोर्ड इरिगेशन है। तो 75% ज़मीन पे खेती होना और 86% एग्रीकल्चर एशोर्ड इरिगेशन के अंदर होना, ये यूपी को एक अपॉर्चुनिटी देता है एग्रीकल्चर का पावर हाउस बनने का, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और हम बन सकते हैं। अब जो फोकस है सरकार का वो इन क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में है। आज की तारीख में लगभग 650 लाख टन फूड ग्रेन और हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस साल में यूपी में होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो पैडी की है, वीट की है, वो वर्ल्ड एवरेज के 1/3 40% इसके आसपास है। दुनिया में पैडी का जो बेस्ट प्रोडक्शन है वो 10 टन पर हेक्टेयर है। हम लोगों के यहाँ अभी ये लगभग 3 टन पर हेक्टेयर के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप और प्रॉस्पेक्ट है हम लोग के पास प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और फिर प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए, और फिर एक्सपोर्ट को करने के लिए। अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद अगर प्रोडक्शन बढ़ता है और हम चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी बहुत प्राइस सेंसिटिव होती है, उनकी कीमत तुरंत नीचे चली जाती है। बहुत अच्छा पोटेंशियल है हम लोगों को अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट करने का, और आज तक हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट है वो पैसेंजर प्लेन के बेली से होता है। ये कि आपके लगेज के साथ ही एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ प्लेन में दूसरे देशों में जाती हैं, जबकि दुनिया के कई बहुत छोटे छोटे देश आज से लगभग 2-3 दशक पहले से वो कार्गो प्लेन के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। इजराइल वगैरह में हर किबुट्स मोशाब के बीच में आप देखोगे कि एयर स्ट्रिप बने हुए हैं और वहाँ से हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस को वो सीधा यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल कमोडिटी को एक्सपोर्ट करने के लिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग ट्रीटमेंट और टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक जगह पे सारे तरह के टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। ये समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपको आम यहाँ से अमेरिका एक्सपोर्ट करना है तो उसका गामा रेडिएशन करना पड़ेगा, अगर जापान करना है तो उसका हॉट वाटर वेपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह सारे तरह के ट्रीटमेंट की व्यवस्था और टेस्टिंग की व्यवस्था एक जगह जेवर में बनाने की कोशिश हो रही है, और आपने देखा होगा इस बार के बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को प्रमुखता से रखा है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब एक बनाना है हम लोगों को जेवर के पास, जहाँ से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ सीधा कार्गो प्लेन से एक्सपोर्ट हो सके। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू लॉजिस्टिक्स का है। चाइना वगैरह और बाकी देश जो ज़्यादा निर्यात करते हैं उनके लॉजिस्टिक के खर्चे 7-8% के आसपास होते हैं। भारत में आज की तारीख में ये आंकड़ा 17-18% होता है। तो इतना 10% का एडिशनल बर्डन आपके मार्केटिंग पर और एक्सपोर्ट के ऊपर सिर्फ लॉजिस्टिक के खर्चे की वजह से है, और आज की तारीख में कोई बहुत अच्छा लॉजिस्टिक पार्क पूरे कंट्री में नहीं है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने की कार्रवाई चल रही है लगभग 300 एकड़ ज़मीन पे, और वो वेस्टर्न यूपी और पूरे नॉर्दर्न इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को उनके जो पीयर हैं, कॉम्पिटिटर हैं साउथ इंडिया में और बाकी जगह पे, उनसे अपने आप उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बहुत तेज़ी से वो बढ़ाएगी। अब मैं 2-3 ट्रेंड्स की बात करूंगा जिनके क्रम में बहुत नए तरह से रीओरिएंट करने की ज़रूरत है चीज़ों को। पिछले 30-40 साल से दुनिया मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही थी, और उसी की वजह से गैट, WTO जिसमें चाइना 2001 में मेंबर बना, सभी इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस होनी चाहिए जहाँ वो चीपेस्ट और बेस्ट प्रोड्यूस हो सकती हैं। इस क्रम में चाइना बिकेम फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, और सभी जगह उनका एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ। ये मल्टीलैटरलिज्म की तरफ सारे हमारे इकोनॉमिस्ट, सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इसकी तरफ ओरिएंट होकर काम करती रहीं।
आपको बताना चाहूँगा कि 2001 में जब चाइना ने WTO ज्वाइन किया तो उस समय चाइना 7% एक्सपोर्ट USA का करता था, यानी USA जितनी चीज़ें इंपोर्ट करता है उसकी 7% चीज़ें चाइना से आया करती थी। जब चाइना एक्सपोर्ट के पीक पे पहुंचा, वो 2017 में था, तो अमेरिका का लगभग 22% इंपोर्ट चाइना से होता था। और अभी 2023-24 में यह आंकड़ा घट के फिर 7% पे आ गया। यानी एक तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। जो मल्टीलैटरलिज्म की थी उसके बाद हम प्रोटेक्शनिज्म की तरह गए और बाईपार्टाइट एग्रीमेंट की तरफ अब दुनिया जा रही है। तो एक ये मल्टीलैटरलिज्म जो अब बाईलैटरलिज्म की तरफ बदल रहा है, इसके क्रम में आपने कई एग्रीमेंट देखे होंगे। EU के साथ हुआ, अभी USA के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो काफ़ी चर्चा में है। लेकिन ये एक बड़ा साइकिल है और एक ये बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ है मल्टीलैटरलिज्म से बाईलैटरलिज्म की तरफ जाने का। दूसरा एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड पिछले 30 साल से जो दुनिया ने देखा है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए था। सभी देश नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ काम कर रहे थे, सोलर पे और विंड पे काम कर रहे थे। पॉल्यूशन कह लें, इन्वायरमेंट इश्यूज़ कह लें, हर इन इश्यूज़ को लेकर रिन्यूएबल की तरफ काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। मैं 2014 से 17 के बीच में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मैंने देखा है कि प्लेन लोड USA एक्सपर्ट्स आया करते थे और प्रकाश जावड़ेकर साहब और बाकी उस समय जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स थे उनको मिलते थे। और इस बात के लिए कि उस समय जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर ओबामा, उनके लिए था कि पेरिस एग्रीमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हमें साइन करना ही है अपने टेन्योर में। यानी काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के बाद सारे दुनिया के देशों ने इन एग्रीमेंट्स को साइन किया और उसके पहले 20-30 साल से रिन्यूएबल पे काम चल ही रहा था। लेकिन सडनली USA पिछले साल से अब वो नॉन रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। कोल, पेट्रोल, अब उनके लिए कोई ऐसी परहेज की बात नहीं है, वो उनको पूरी तेज़ी के साथ एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं। मैं 2004 से 7 के बीच में हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में डायरेक्टर था, तो उस समय 2006 से 16 की जो देश की ऑटोमोबाइल पॉलिसी लिखी जा रही थी उस टीम में मैं था। हम लोग उस समय जब ऑटोमोबाइल का एक रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी ऐसी नहीं है जिसका आप नाम बता सकें जो एक्सेल करती हो कार में या जीप में या SUV बनाने में, जो कि इंटरनल कंबस्चन इंजन पे बेस्ड हो। कोई नहीं था उनके पास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस रेस को छोड़ दिया और उस दिन से यानी 10-15 साल पहले से उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे और बैटरी पे काम करना शुरू किया। और आज की तारीख में आप देखें, पिछले साल सितंबर में उन्होंने BYD बिल्ड योर ड्रीम जो कंपनी है चाइना की, उन्होंने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया पैसेंजर कार इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने में। यानी 15 साल उन्होंने डेडिकेटेड तरीके से अपनी एक जो उन्होंने लाइन बनाई कि हमें इलेक्ट्रिक पे काम करना है, उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया। आज की तारीख में USA के पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रिन्यूएबल में बहुत एक्सेल करती हो या बहुत अच्छा प्रोडक्ट कोई बेचती हो। सारी रिन्यूएबल की कंपनीज जो हैं वो चाइनीज़ हैं या यूरोपियन हैं। तो अब अमेरिका रिन्यूएबल से अपने आप को वापस ला रहे हैं कि अब हम कोल या पेट्रोल को एक्सप्लॉयट करेंगे और तेज़ी से करेंगे। नया ट्रेंड एक जो अब चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। डाटा सेंटर्स की बात कह रहे हैं। डाटा सेंटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्री मानी जाती है और आजकल किसी प्रोड्यूस की जगह, किसी प्रोडक्ट की जगह अब इस फैक्ट्री में इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चर होता है, ऐसा कहते हैं। डाटा सेंटर्स की मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में अमेरिका के पास लगभग 54 गीगावाट कैपेसिटी के डाटा सेंटर्स हैं, चाइना में 20 गीगावाट के डाटा सेंटर्स हैं, यूरोप सभी देशों को मिलाकर लगभग 10 गीगावाट हैं और इंडिया के पास 1.6 गीगावाट है। ये डाटा सेंटर जिनके पास अच्छी कैपेसिटी के होंगे, ज़्यादा होंगे, वहाँ के जो भी लोग AI या IT में काम करना चाहते हैं वो कम पैसे पे काम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हम लोगों के यहाँ एक कंपनी सरवन है जो AI में काम करते हैं। उन्होंने लगभग 250 करोड़ खर्च करके
और रीजनल लैंग्वेजेस पे बनाया एआई के कुछ सॉल्यूशंस। उस 250 करोड़ में लगभग 180 करोड़ रुपए उन्होंने अमेरिकन कंपनीज़ को जीपीयू यूज़ करने के चार्जेस पे किए। तो इतना महंगा है आज की तारीख में अगर आप जीपीयू यूज़ करना चाहते हैं किसी का। 1 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट करने में लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। इंडिया 20% डाटा दुनिया का आज की तारीख में जनरेट कर रहा है, लेकिन लगभग 3% के आसपास स्टोरेज कैपेसिटी है। तो डाटा सेंटर्स तो इंडिया में बनने हैं, वही जो भी कंपनी बनाए, अब उसमें कुछ रियल एस्टेट की कंपनी, आईटीज़ की कंपनी और ये जो आपके हाइपर स्केलर हैं, ये मिलकर बना रहे हैं। लेकिन इंडिया में बनना होगा क्योंकि हम लोग डाटा सोवरेंटी की भी बात कर रहे हैं। और इस क्रम में देखें लोग या दुनिया कैसे सोच रही है। दुबई में उन्होंने एक गोल्डन वीज़ा का तो अपना रखा ही था, एक उन्होंने डाटा एम्बेसी का कॉन्सेप्ट दिया है। एम्बेसी जैसे एक सोवरेन जगह होती है, अगर इंडिया के एम्बेसी अमेरिका में है तो वहाँ पे इंडिया का कानून चलता है। उसी तरह यूएई ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है डाटा एम्बेसी का, कि आप आएँ हमारे यहाँ डाटा सेंटर्स बनाएं और यहाँ पे आपकी सोवरेंटी रहेगी। तो इस हद पे जाकर लोग काम कर रहे हैं डाटा सेंटर्स को लाने और बनाने के लिए। तो इस क्रम में सभी लोगों को काम करने की ज़रूरत होगी और अपने देश में खास करके। मैं आपको अब बताना चाहूँगा जो इस बजट में बड़े इनिशिएटिव्स सरकार ने लिए हैं। और एक डाटा सेंटर क्लस्टर्स बनाने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है कि आप बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स हैं उनको एक साथ लाकर और 5 गीगावाट तक के कैपेसिटी का डाटा सेंटर क्रिएट करने के लिए आप काम करें। इसमें इन्वेस्टमेंट जो मेजर है वो प्राइवेट सेक्टर ही करेगा, कहीं भी किसी भी देश में ये गवर्नमेंट की ओर से इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवन अमेरिका में भी जो बड़े बड़े, वहाँ लगभग 15 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं डाटा सेंटर्स बनाने के लिए, और इनका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट पावर का होता है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी उनको ये भी परमिशन दे रखा है कि अगर आप अपना पावर प्लांट बनाना चाहते हैं तो बनाइए। 4-5 साल पहले तक लगभग 150 थर्मल पावर प्लांट अमेरिका में बंद हो गए थे इन्वायरमेंट को लेकर। अब उनको ये जो हाइपर स्केलर कंपनीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन एआई, ये लोग अब उन थर्मल पावर प्लांट्स को खरीद कर और दोबारा चालू कर रहे हैं अपने डाटा सेंटर्स में पावर सप्लाई करने के लिए। तो इस स्केल पर जाकर और लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ स्टेट में डाटा सेंटर क्लस्टर्स के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। दूसरा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टेट डाटा अथॉरिटी बनाने का लिया है। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो सरकार में काम कर चुके हैं और काफ़ी लोग हैं जिन्हें सरकार से तारुफ रहा है। आप जब भी कोई किसी भी विषय में, किसी भी सेक्टर में कोई भी आंकड़ा मांगें तो शुरुआत होती है कि लखनऊ से लोग चिट्ठी लिखेंगे जिले तक, जिले वाले नीचे लिखेंगे और फिर वहाँ से आंकड़ा ऊपर आएगा। वही आंकड़ा आप महीने भर के बाद मांगें तो वो दूसरा आंकड़ा आएगा। यानी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती और कोई रियल टाइम अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो कैसे इस डाटा को रियल टाइम अवेलेबल कराया जाए और कंसिस्टेंटली मैनेज किया जाए, उसके लिए एक स्टेट डाटा अथॉरिटी बनाने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। इसका एक और भी एडवांटेज होगा कि बहुत सी चीज़ें जो पेपर पर रिफ्लेक्ट होती हैं वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती हैं। जैसे एक एग्जांपल यही था पैडी का जो मैं कह रहा था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार लगभग 27 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और एक सैटेलाइट डाटा यूज़ करके और एरिया और प्रोडक्टिविटी ली जा रही है, उसमें 37 आता है। फार्मर से आप जब बात करो तो वो लगभग 45-50 क्विंटल तक की बात करते हैं। यानी मौके पे जो स्थिति है कई सेक्टर्स में, मेरा अपना ये अनुभव है कि वो जो कागज़ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे बेहतर है, लेकिन वो सही तरीके से कैप्चर नहीं हो रहा है। स्टेट डाटा अथॉरिटी उसमें काम करेगा। एक रोबोटिक्स मिशन बनाने का भी सरकार ने निर्णय लिया और उसको लॉन्च किया है। मैं जो कह रहा था कि ह्यूमन रिसोर्स पे काम करने की बात है, एजुकेशन और हेल्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आज की तारीख में यूपी का 141 है, केरला में 18 है, यानी बहुत ज़्यादा है ये, और इसे कम करना बहुत ज़रूरी है। स्टंटिंग और वेस्टिंग भी 35-36% है। ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इस बार सीएम साहब ने अलग से लगभग 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं कि फोकस तरीके से इस पे काम किया जाए कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाया जाए, स्टंटिंग वेस्टिंग को घटाया जा सके।
सोलराइजेशन ऑफ डीजल पंप के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है इस बजट में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 86% एग्रीकल्चर जो इरिगेटेड है उसमें लगभग 70% इरिगेशन निजी ट्यूबवेल से होता है। लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख ट्यूबवेल लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, उसमें से 16 लाख इलेक्ट्रीफाइड हैं, बाकी डीजल पे चलते हैं। तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये सभी 40 लाख को सोलराइज करेंगे और पहले डीजल से शुरुआत होगी, फिर सभी को सोलराइज किया जाएगा। एक्वा ब्रिज एक दुबई की कंपनी है, उसके साथ काम हो रहा है फिशरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए। इस पे सरकार ने फोकस तरीके से सैंक्शन किया है और काम होना है। सिटी इकोनॉमिक रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है और उस क्रम में उत्तर प्रदेश में पहले से काम चल रहा था। स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ का बनाया गया था, एक बनारस, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है। तो ये 2-3 सिटी रीजन्स पे काम करने की बात है। ये भी एक बहुत डिबेट करके और डिसीजन लेने की बात है। हम बात करते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होनी चाहिए, यानी सभी क्षेत्र में विकास की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन देखने में ये मिलता है कि जहाँ अर्बन एग्लोमरेट्स हैं वहाँ डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। पूरी जापान में 33% लोग टोक्यो में रहते हैं और लगभग 35% जीडीपी टोक्यो से आता है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि सभी ज़िले में आप थिनली अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करें या कुछ शहरों को पकड़ के और उनके आसपास चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करें। यूपी में अभी 10 ज़िले जो वेस्टर्न यूपी के हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये लगभग 80% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की बात है। महिला उद्यमियों के फोकस करते हुए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं या बाकी जो महिला उद्यमी इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट देश में हर जगह बिक सकें, उसके लिए कहीं भी मार्केटिंग के लिए अगर कोई शॉप लेना है तो 3 साल तक सरकार उसका रेंटल बियर करेगी। ये एक नई इनिशिएटिव इसमें ली गई है ताकि महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप हर न्याय पंचायत लेवल पे एक क्रिएट करने की बात है। एक बहुत बड़ा पहल जन विश्वास सिद्धांत का है। यूपी पहला स्टेट हो रहा है जो जन विश्वास सिद्धांत इस बजट में सीएम साहब ने अनाउंस किया है और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप करने के बाद अब स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है और यहाँ पर एक लोगों पे विश्वास करते हुए काम करने का फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की जा रही है। यानी कि जो चीज़ किसी एक्ट या रूल से प्रतिबंधित नहीं है उसको करने के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने निकले और आपको परमिशन की बात होती है। तो इस फ्रेमवर्क में इस पे सोच चल रहा है कि जो चीज़ स्पेसिफिकली किसी एक्ट या कानून से रोका नहीं गया है उस काम को करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी जगह एक प्रपोर्शनेट बर्डन होना चाहिए, यानी अगर कोई बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री या एक्टिविटी है तो उस पर एक लेवल का क्लियरेंसेस चाहिए। अगर कुछ बिल्कुल नॉन पॉल्यूटिंग है तो उस पर कुछ वही सख्ती या उसी तरह की सीवियरिटी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, यानी ग्रेडेड रिस्पांस और ग्रेडेड सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो। इस दिशा में काम करने की कोशिश हो रही है। साथियों, मैंने आपका लंबा समय लिया, लेकिन एक चीज़ आखिर में कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, ये हमें हर दशा में बढ़ाने की ज़रूरत है और यहाँ बैठे बहुत से लोगों को ये जानकारी होगा कि चाइना वगैरह अपनी फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कई देशों में उन्होंने लैंड खरीदने की कोशिश की और लैंड खरीदी। लैंड खरीदने के बाद जब उन्होंने प्रोड्यूस किया, देन दे रियलाइज्ड कि आप पैदा कर सकते हो किसी दूसरे देश में जाकर, लेकिन वहाँ से उस कमोडिटी को अपने देश में लाने के लिए उस देश के कानून से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी अगर वो इजाज़त देंगे तभी आप ला सकते हैं। यानी वहाँ ज़मीन खरीद के पैदा करने से आपके देश की फूड सिक्योरिटी नहीं उसके कंट्रोल में आती है। तो उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई कॉफमॉफ करके, और कम लोगों को पता है कि जो ग्रेन ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं वो पेट्रोलियम कंपनी से बड़ी हैं और ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो काफ़ी लो की में काम करते हैं। तो अभी दुनिया में 3-4 ग्रेन कंपनीज़ हैं जो 90% ग्रेन ट्रेड कंट्रोल करती हैं और उनको ABCD बोलते हैं। A इज़ एंडीज़, B इज़ बंगीज़, C इज़ कारगिल, D इज़ डेफरस। ये 4 कंपनीज़ 80% से अधिक ग्रेन ट्रेड को कंट्रोल करती हैं।
कॉफमो करके चाइना ने कभी 5वीं कंपनी बनाई है। यानी इंडिया को भी अपने ग्रेन को, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को बनाने की ज़रूरत है, जिस दिशा में यूपी एक पहले राज्य के रूप में आ रहा है जो पहल कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you very much, Mr. Singh, sir. सबसे पहले तो give a huge round of applause for Mr. Singh. I think it was a compelling keynote. आज के dialogues का आपने पूरा tone set कर दिया और मुझे लगता है इस बात से हम सब लोग सहमत हैं कि जो पहले संभावनाओं का प्रदेश हुआ करता था, आज की डेट में उपलब्धियों का उत्तर प्रदेश कहा जाता है. Now moving forward, I would like to invite Mr. Avnish Avasthi, who is an advisor to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, who has played a pivotal role in shaping policy frameworks and driving institutional reforms across the state. Give a huge round of applause for Mr. Avnish Avasthi, sir. And I would like to invite Mr. Praveen Kumar once again and Mr. Prasad Sanyal, sir. Give a huge round of applause. And we'll do the felicitation. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Give a huge round of applause for Mr. Avnish Avasthi. So it's a beautiful moment, right? Thank you so much, sir. Now, in this, we'll be having a fireside chat, which is based on institutions powering UP's transformation. Now, I know that you all know the history of UP. Strong institutions form the backbone of sustainable governance. In this fireside chat, we explore how institutional reforms, law and order, technology-driven transparency, and citizen-centric governance have accelerated outcomes in Uttar Pradesh. Now we have Mr. Avnish Avasthi with us. Now I would like to invite Mr. Sanket Upadhyay, who's a senior journalist and prominent voice in Indian media with over 24 years of experience across print, television, and digital platforms. Now the stage is all yours, Sanket. Thank you. It's a fireside chat, so I expect some fire from you, Sanket. Really? Thank you, Sanket. Thank you, Manoj. Thank you, Praveenji, and all the guests here. So, shoot. Thank you very much, Avnish ji. And thank you, Bhavna, for this introduction. Avnish Avasthi ji, as the advisor to the Chief Minister, and since the topic of this fireside chat is institutional reforms, I want to know from you what has changed in the last 9 years from an institutional point of view. Well, Sanket, a lot has been said by Manojji just now, and that is in the context of what is and where is UP right now after 9 years, and it's in its 10th year in the second term of the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji. A long distance has been covered. We have been in governance since 87 and almost completing almost about 40 years, and we have seen any number of governments coming, any number of political parties being in power, and we have been part of all governments, literally. Well, I remember the day when we joined this state in 2017 as part of this bureaucracy here in Uttar Pradesh. Yogi ji was very clear that institutional reform has to start with the rule of law to be established on the ground and a zero tolerance to crime and criminality. Part of the entire exercise is what visually looks as the bulldozer action. Part of the exercise is what happens on the ground in terms of
action against the mafia. But I'll just give you 4 or 5 things because I've been part of the Home Department also. The very first institutional reform that he did, and when he did the reform, he meant it and ensured it, was the change in the perception of law and order, change in the way the police force works in Uttar Pradesh. And by the way, Uttar Pradesh is the largest police force of the world. So we are handling the largest manpower of law and order in the entire world. With that, when he started off with the law and order machinery of the state, he was very clear that we have to literally change the complete scenario and the way people look at the police. You have asked me on institutional reform, so since it's a very learned audience, I'll just put 5 or 6 things that he did very systematically. And that is what ensured that the entire institution of the UP police was changed. One, we had very little manpower within our UP police. Posts were vacant for quite a while. Proper recruitment had not been done. Recruitment which were done in the past were questioned by the courts all across for the last 10, 15 years. But when Yogi ji came, he got this very clear in his mind that we have to increase the size of the force, but it has to be very transparent and we get the best manpower for our UP police. So he ensured that more than 2.5 lakh new police personnel joined over this last 8 or 9 years. And the institution that we have, which is the UP Bharti Board, that was totally refurbished, technology was used, and from a 3.5 lakh UP police number, we are now crossing to 5.5 lakhs. Within this first aspect of UP police, of increasing the size of the force, we also ensured that every recruitment had 30% women coming into the system. And earlier, when we started in 2017, the women workforce in the police was only 10%. It is now crossing 20%. And very soon, we will achieve the target of having 30% women within our force. So that was the first pillar. The second pillar was infrastructure within the UP police. What is the infrastructure of the police? And I'm speaking of this not just for the police, but for the fire department, for the jail department, for the intelligence department, for the various organs within the entire police force. The infrastructure for a UP police establishment is Thana, the barracks for the policemen, the housing arrangement for the entire police force, the infrastructure for the fire stations, the infrastructure for the state headquarters of all the various organizations. A special security force was also established on the lines of CISF. Infrastructure for all of that. Infrastructure for the STF. Infrastructure for the UP ATS. So all of this was done, and our infrastructure fund, which was hardly 800 to 900 crores for UP police, has now been increased over the years to about 5,000 crores every year. So this infrastructure is now ensuring that modern Thana buildings are available, that barracks are available for every policeman of our state, including women. And we now have, for the first time, multi-storied 8, 10, 12 floor structures within the UP police headquarters of every district, which are called the police lines, for the very first time. So now you have almost 50 to 60% of the police force already accommodated in government accommodation. So the policeman is very sure that his family is safe within an environment where his children can also have a reasonable and decent life. I can also tell you that new districts in our state, all these districts, Chandauli, Amethi, Shamli, all of these, Hapur, all of these districts for the last 15 years, they had been created long, long back. We saw them long back. They never had a police line. They never had a district jail. They didn't have an integrated court complex. So that infrastructure part is now in place. We were part of that journey, so I'm very happy to say that now our state has increased the infrastructure expense. Third aspect, technology. Why can't we use the best of technologies for all the police organizations within our system? So the best of technologies for cyber security, the best of technologies for the forensic labs,
the best of technology for the intelligence gathering. All of this was put in place and a lot of money was spent, and UP 112, we have now a separate brand new UP 112. What was about 14 minutes of response time for UP 112 has now come to almost 6 minutes. It was all possible through new technology and a lot of effort in the area of technology. I can tell you, the Forensic Institute, which was the Shilanyas was done by the Honorable Home Minister, Government of India, and the inauguration was done by the Prime Minister. No state in the entire country has a Forensic Institute of this nature, which caters to the technology and the training requirements of our force. So this was the third pillar. The fourth pillar was what was most important, and that was prosecution. Our police force filed the charge sheet, our police force went up to the courts, but prosecution was very poor. The prosecution machinery was not effective, and we had, I can tell you, I have served in a district where we had a mafia who was a registered mafia. He had almost 99 or 100 cases. Not a single case was he convicted ever, and he had a history of crime right since 1996 when I was posted in Azamgarh. Not a single conviction. Now we have in our state the best conviction machinery. We have the best conviction rate in the entire country, and the conviction rate not only is excellent in the criminal areas, but is also excellent, is the best in the women crime area, in the POXCO cases and all of this. So the fourth aspect was putting the conviction machinery, the prosecution machinery in place, and this was monitored and followed up. And the fifth area where the state did well was coordination with the judiciary, coordination with other, the Government of India, coordination with all other stakeholders within the law and order. And this is again here that the new commissionerates of police were formed in 7 districts, and now you all know that the size of the UP police force within the officer system also has now increased. So that was the change. So I just thought I'll put it right across the board that this is what was done very systematically, and I'm so very happy to tell you that the Chief Minister of Uttar Pradesh, who is also the Home Minister of Uttar Pradesh, reviews the law and order of the state every day at 9 or 9:30 in the evening with the senior officials of the Home Department and the police force, and is very hands-on and very clear that there should be zero tolerance to crime, and he is very, very clear that mafia agar hai to छोड़ना नहीं है, माफिया की ज़मीन खाली करो. यहीं लखनऊ में कोई भी जाकर देख सकता है कि माफिया की ज़मीन पर खाली करके गरीबों के लिए आवास बनाए गए. अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला let's put some fire in the fireside chat. Yes. Right? You've mentioned 5 institutional reforms related to policing in the state. Yes. I can't challenge your आपके आंकड़ों को मैं चुनौती नहीं दे सकता. जाहिर सी बात है आप प्रशासन में हैं, आपने उसको अच्छे से स्टडी किया होगा. जिस एस्पेक्ट को आप छू करके निकल गए अवनीश जी शुरुआत में, उस पर ज़रा बात करते हैं. And that many institutes, many individuals, courts have occasionally called an extrajudicial form of ensuring justice. Bulldozer action. और अभी क्योंकि मैं ऐड कर दूं, अभी ही एक तस्वीर आई है जिसमें मैं अपना सवाल पूछ लूं, अपना सवाल कंप्लीट कर दूं. मेरा सवाल ये है, उसमें एक आरोप ये लगता है कि यूपी पुलिस लोगों के साथ हाफ एनकाउंटर करती है. तो क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म ऑफ जस्टिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अंदाजा है कि यहाँ पर हमारी कोर्ट्स में कितने मुकदमे किस किस सन के पेंडिंग हैं? मैं होम सेक्रेटरी था, एक बार मैंने रिव्यू किया और फिर हम लोगों की पेशी भी हुई. 40 साल से मुकदमे पेंडिंग हैं, 40 साल से जो है पेशी नहीं हुई है. सो आप प्रदेश चला रहे हैं ऑन अ डे टू डे, मिनट टू मिनट बेसिस. कहीं गाड़ी लड़ जाती तो आप चाहते हैं कि तुरंत एक्शन भी हो जाए, और यहाँ तो पुलिस से एक्शन आप मिनटों में चाह रहे हैं, और कोर्ट से एक्शन आप सोच रहे हैं कि उसको 10 साल बाद भी करेंगे. ये प्रश्न आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप में पूछने की, आप पूछेंगे किससे? जुडिशरी से पूछेंगे. आप पूछने वाले कौन है? आज की तारीख में पूछने वाले कौन है कि क्या कोर्ट्स में इतने सारे मुकदमे जो पेंडिंग है, और कई बार निर्दोष लोग भी कोर्ट के मामले में जो है अगर अटके हुए हैं तो उनको कौन देखेगा? समस्या ये है कि अगर हमें एक्शन लेना है, अगर हमें कार्रवाई करनी है,
अभी बहुत जल्दी ही जो है मुख्यमंत्री जी ने किसी मंच से कहा भी है, पुलिस इस बात के लिए है, पुलिस के पास अगर वेपन है, पुलिस के पास अगर कार्रवाई करने का एक अधिकार है, तो वो कार्रवाई करेगी कि वो वेपन लेके केवल घूमती रहेगी? तो बात इस बात की है, कार्रवाई तभी होती है जब कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। ये बात आपकी ज़रूरी है कि अगर कहीं एनकाउंटर है तो उसके सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई एनकाउंटर होता है तो उसका आप तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद एक प्रॉपर जुडिशियल मैकेनिज्म होगा। अगर गलती होगी तो पकड़ा जाएगा, कार्रवाई सही होगी तो आगे बढ़ेंगे। जी, अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इकोनॉमी। यस, उत्तर प्रदेश boasts of building itself a $1 trillion economy state. यस, Now, how does वी one... वर द फर्स्ट वन टू डू दैट। Exactly. योगी जी जब आए तो उन्होंने कहा, 2023-24 की बात है, कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना दिया और विकसित भारत में 2047 का सपना इवॉल्व होने लगा, तो ये कहा गया कि यूपी 20% है पॉपुलेशन का, पूरे देश का लगभग 17-18% है, तो हमको भी 1/3 होना चाहिए। हम, भारत सरकार का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। We will be a $5 trillion economy. We are almost around 4 trillion or so. So if government of India is aiming for 5 trillion, why shouldn't we be 1/5 of that, which is 1 trillion? But 1 trillion जो है ये लक्ष्य रखा 1 trillion ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। Let's put the fire again. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विजन जो है, बहुत सारे जो सपने हैं, सुनने में अच्छे लगेंगे ही, और लेकिन काम भी बहुत करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है अवनीश जी, one is this $1 trillion of contribution to the GDP. The other is per capita GDP. ये इतना जरूरी है कि अंत के आदमी तक आपका विकास पहुंचे, उसके लिए क्या प्रयास हो? सर, 1960s और 70s में और रादर उससे पहले भी ले जाएं तो मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर was the best, one of the most important cities for manufacturing in the entire country. UP had large component of manufacturing within our state. All the arms का जो पूरा है, ordnance factory सब उत्तर प्रदेश में ही थी, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स यूपी में ही थी। हम यूपी में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में 50-60s में कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन 70s के आसपास हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो लगभग नेशनल लेवल के 80% आ गई थी। और 2017 तक जबकि आगे हम लोग जो है आपके सामने एक योजना बनाकर बता रहे हैं, 2017 तक आवर per capita income was 50% of the national average, which is what you are saying is correct, that यूपी का जो आदमी है उसकी per capita income कम है। आज की तारीख में 2017 के बाद से जो पर कैपिटा इनकम मनोज जी भी अभी बताकर गए हैं, लगभग जो हमारी नेशनल लेवल की 50% के आसपास थी, अब वो पिछले साल 1,09,000 रुपए तक हो गई और लगभग इस साल के अंत तक जो है 1,20,000 रुपए तक हो जाएगी। तो वी हैव रिवर्स द ट्रेंड एंड वी आर ऑलमोस्ट अचीविंग 53 to 54% of the national average. So the curve is now changed. In fact, if you see our first time economic survey has been presented, it very clearly states that we have bucked the trend and we are now increasing our contribution for per capita income in the state. Now this is only possible if you have large scale industrialization. You have talked of $1 trillion economy. Just now it was very clearly said, we are now the largest agricultural producer, food grain producer in the country. But we have a long way to go. So where do we need to move forward? In the agriculture and the allied sector, we have to be almost 2.5 times. That is 1 trillion. In the manufacturing sector, we have to increase the number of industries. Number of industries which were registered in 2017 were only about 13,000. Today we have crossed 31,030 or something, and we will cross another maybe 500 or 1,000 odd factories within the current financial year itself, which means more than double the number of factories have been registered now in Uttar Pradesh. So industry has to grow by 1 trillion. If we have to grow by 1 trillion, industry has to grow about 3.5 times. But you know, Avnish ji, Service sector, which is the third sector, again, if we have to reach 1 trillion, we have to grow by about 3 times. you see, the point So is, that Avnish ji, how do you, and I heard Manoj sir also. Yeah.
you've got Gautam Budh Nagar, which is the big contributor Yes. to the state's Gautam exchequer. Budh Nagar, Ghaziabad, and the Ghaziabad, entire exactly. NCR. Now, how do you ensure that the districts that have been left behind traditionally, वो आप ही के 9 साल में नहीं, पहले से भी वो उनका contribution बहुत कम है. Per capita अगर आप देखें वहाँ पर वो some of the districts are lagging behind. आज भी पिछड़ी हैं. देखिए, उनका उत्थान कैसे होगा? ये industries वहाँ कैसे पहुँचेंगी? देखिए हम आपको 2-3 चीज बता दें. इकोनॉमिक्स इज वेरी क्लियर दैट जो चीज जहां मजबूत है उसको वहां करना पड़ेगा. आप आर्टिफिशियली इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के विपरीत इंडस्ट्री श्रावस्ती में लगाने नहीं जाएंगे. आपको जो है इंडस्ट्री एनसीआर में लगाना पड़ेगा, लखनऊ रीजन में लगाना पड़ेगा, वाराणसी जौनपुर रीजन में लगाना पड़ेगा, प्रयागराज रीजन में लगाना पड़ेगा. जो उस एरिया की स्ट्रेंथ है, रॉ मटेरियल की, लॉजिस्टिक्स की, मैन पावर की, उस एरिया के स्ट्रेंथ के बेसिस पर लगाना पड़ेगा. मैं आपको केवल इतना बताना चाहूँगा, अभी आपको बताया गया कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 30-40% ऑफ व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल. सो 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट हैज़ बीन टेकन अप फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सो ईस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग का पूरा एरियाज को अगर आप पुश करेंगे तो बहुत आगे जाएगा. सोलर पॉलिसी, वी वर पार्ट ऑफ दिस movement of solar policy. I retired as the power secretary of the state. Today, Bundelkhand is moving very fast on the solar area, green hydrogen area. So Bundelkhand में आज आप जाएंगे तो great chunks of Bundelkhand are now getting solar parks. Our land is relatively more fertile. We have more water than other areas of the entire country. But we are still pushing far in Bundelkhand in this area. In Bundelkhand, because of irrigation projects which were lying for 30 years, we have started now in Mahoba, Jhalon and all these areas. You are now seeing the Jayat crop. I was at the Bundelkhand Expressway area only about 10 days ago on the ground, and मटर ट्रक के ट्रक मटर की जो है सप्लाईज दिल्ली के मंडियों में जा रही हैं. दोपहर दिन में जो है मटर तोड़ी गई, शाम तक इकट्ठा हुई, बोरों में पैक हुई, रात तक मूवमेंट हुआ, सुबह की समय में मंडी. तो बुंदेलखंड में आप जो है जायद फसल में मक्का, मटर, दाल, ये चीज़ें हो रही हैं. एनसीआर में आज जो है बहुत जल्दी ही आपका जेवर एयरपोर्ट आ जाएगा. जैसा अभी बताया गया, डेटा सेंटर्स, डेटा पॉलिसी, सेमीकंडक्टर का एक नया प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले HCL फॉक्सकॉन का 21 तारीख को. तो उस पूरे एरिया में जीसीसी, सेमीकंडक्टर, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इस पूरे एरिया को आगे बढ़ाना है. मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ. आप में से कितने लोग दवा खाते हैं डेली? डेली दवा, मैं भी खाता हूँ दवा, मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे दवा खानी ही होती है. आप में से कितने लोग दवा खाते ही हैं? कभी ना कभी बीमार पड़ जाते हैं तो खाते हैं. यूपी इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. We have more than 24-25 crore people. We only produce 2% of our pharma. And all the pharma production in the entire state is limited, and we are importing, not just pharma, we are importing at an all India level all the medical devices that we use. So UP has now given a push to the pharma sector. Very soon UP will give a push to leather. नई पॉलिसी लाई गई, अब लेदर के लिए भी आगे बढ़ा जाएगा. यहाँ लखनऊ में एक टेक्सटाइल पार्क जो है PM मित्रा पार्क शुरू किया गया, बहुत जल्दी उसका लैंड अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा. सीड पॉलिसी लाई गई, सीड पार्क शुरू किया गया, उसमें भी अब थोड़ा प्रयास और करेंगे तो सीड पार्क लाया जाएगा. तो बेसिक पॉइंट ये है कि जो जहाँ की मजबूती है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा. उसका सबसे अच्छा आधार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से देश में यूपी ने लीडरशिप दी है. पूरे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है. जो जिस जनपद का मजबूत मैन्युफैक्चरिंग है या मजबूत जो है चीज़ बनती है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसकी मार्केटिंग की जाए, ब्रांडिंग की जाए, पैकेजिंग की जाए. चलिए, उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जितना गौतम बुद्ध नगर का योगदान होगा, अपनी ही तरीके से श्रावस्ती का भी योगदान होगा, बलिया का भी होगा. संकेत मैं अभी गौतम बुद्ध नगर में एक रोबोटिक्स फैक्ट्री में गया था लगभग 2 साल पहले. आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था. रोबोटिक्स की एक फैक्ट्री में मैं गया था, उसका नाम है एडवर्ब. उस रोबोटिक्स की फैक्ट्री में ITI ट्रेंड लड़कियां काम कर रही थी. और उन ITI ट्रेंड लड़कियां कहाँ की थी? सुल्तानपुर की,
फैज़ाबाद की, ITI ट्रेन लड़कियां गोरखपुर की थी, ITI ट्रेन लड़कियां अमेठी की थी। अभी ब्रह्मोस फैक्ट्री शुरू की गई है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। ब्रह्मोस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, कोविड में आपने देखा था कि पूरे देश के जितने हमारे यूपी के लोग बाहर काम कर रहे थे, उनको वापस बुलाने, 40 लाख लोगों को वापस बुलाए गए थे ट्रेनों से। हम अपने प्रदेश में अपने प्रदेश के लोगों को ट्रेन करके एक मजबूती से आधार दे दें। इस बजट में 10 लाख लोगों की जो है स्किल ट्रेनिंग का एक पूरा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रखी गई है। तो हम अपने प्रदेश में अगर हमारे किसी बच्चे को जो है श्रावस्ती से नोएडा काम करने जाना होगा तो बहुत खुशी हमारी होगी। जितना बेंगलोर, हैदराबाद और बाकी सब जगह है और चेन्नई है, इसमें अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की संख्या देखेंगे और बहुत सारे लोगों के बच्चे यहाँ काम कर रहे होंगे, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और विदेशों में भी आप जाएं तो उत्तर प्रदेश की काफ़ी संख्या है। कुछ स्टेट्स ने, आंध्र ने, बाकी स्टेट्स ने अपने प्रदेश से जुड़े लोगों को जोड़कर मजबूती से आगे बढ़ाया है। हमको भी अपने में विश्वास करके उत्तर प्रदेश के लोग विश्व भर में जहां अच्छा कर रहे हैं, जोड़कर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। चलिए, अवनीश अवस्थी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू संकेत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टाइम्स ऑफ इंडिया। Thank you, Avnish sir. Thank you, Sanket. Give a huge round of applause for this lovely conversation. And I think it was a thoughtful conversation. So हमने बात की उत्तर प्रदेश किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स के हाथ में आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ देख रहा है, चेंज देख रहा है, एंड दैट्स ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। सो वी delve deep into how strong institutions have become the backbone of Uttar Pradesh governance transformation. Now, this discussion highlighted the critical role of transparency, accountability, and technology in modern decision making. We heard about significant reforms in law and order that have rebuilt citizens' trust and created a safer environment for growth. The conversation also touched an innovative initiative like citizen helplines and direct CM office interventions that are changing how services reach people. Now, perhaps most valuable were the insights on institutional reforms that could serve as blueprints for other states across India, proving that good governance at scale is not just possible, it's replicable. Now, time for our first panel discussion, and this panel discussion we are going to talk about shaping Uttar Pradesh's future. और आप जानते हैं जब फ्यूचर की बारी आ जाती है तो हम बात करते हैं AI की, how we are adapting the new technology. So in this panel discussion, we are going to talk about shaping Uttar Pradesh's future. We turn our focus on how a state as vast and diverse as Uttar Pradesh is leveraging scale, adaptability, and inclusivity to drive transformation. This panel will examine the role of technology, AI, as I just told you, local innovation models, and skilling initiatives in shaping the state's future growth trajectory. And for this panel discussion, may I please call upon Mr. Vikram Singh, who is a former Director General of Police, Uttar Pradesh. Sir, can we please have you on stage? Give a huge round of applause for Mr. Vikram Singh. Dr. Nitin Ramesh Gokarn, who is a former Chief Secretary from Uttar Pradesh. जोरदार तालियां हो जाए। आज ऐसे हमारे सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, भाई आपकी तालियां तो बनती हैं और वो रुकनी नहीं चाहिए। May I please call upon Major General Dr. S.B. Asthana. Sir, please, can we have you on stage, who is an international strategic and security analyst. Dr. Shikha Tripathi, she's a former Deputy General Manager, NABARD. Ma'am, please come on stage. God bless you. Thank you, Priya. Thank you, sir. Yes. एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी dignitaries का स्वागत करें. And now, may I please call upon Mr. Sanket Upadhyay, who's a senior journalist. एक बार फिर से आपको तंग करूंगी, संकेत.
Thank you very much. Really sorry. Now, may I please call upon Major General Dr. Vibha Datta also, who's an Executive Director and CEO, AIMS Gorakhpur. And please, can we have you on stage? जोरदार तालियों से स्वागत करें. Major General Dr. Vibha Datta. Thank you. All right, welcome back. In this part of the discussion, we are going to talk about innovation at scale, shaping Uttar Pradesh's future. And as you can see on the stage, you have a wide variety of and a cross section of talent, people who have worked in the administration, in the police, to those who have served in the army, to those who are from the forces and now are serving the medical profession, to food and sustainability. So this is quite a mix that you have on the stage right now. So let me begin with you, Dr. Singh. Your experience as the chief of the police, and drawing from your experience, what do you think from a policing point of view? You just heard Mr. Avnish Avasthi also talk about institutional reforms in policing. How important is that as stage one in a state as wide and vast as Uttar Pradesh before you can think or dream of any type of innovation? Thank you, Mr. Sanketji, for the wonderful question. The basic premise is what worked yesterday will not work today. Till as late as 2010, when I was the DGP, the only technology that we were introduced to was the indigenous lie detector, that was a lathi. And also the shortcuts to getting confessions, that was, you would understand, a word to the wise is enough. But today the technology-driven police department is such unprecedented revolution has taken place. I have 2 constables of Noida Police who, sir, are working for the PhD in AI and cyber security. Constable level. Gone are the days when constables are Bhola Ram and Kalu Ram, and they would at best be with great difficulty sign Kalu Ram. Now they can give tutorials to us on AI applications of policing, and therefore I would say that this is a dream come true and a revolution in the making. I would say that discretion is the better part of valor. There are those sitting in this august auditorium who have been the victims of crime. But today, unless a person has suicidal tendencies, he would not even look at you today. That is the difference that application of technology has made today, Sanketji. Then 112, this Shakti Karan, every recruitment was besotted with scandal. And it was my painful duty to discharge thousands of constables and also suspend 12 senior IPS officers who were part of the recruitment. This 1,60,000 recruitment went off without a single complaint. This is also a game changer, and now we have people, constables right up to IPS officers, and the cyber crime, the cyber criminals had better run for their money, because we have 12 forensic science laboratories, 1 forensic science university, and the scientific aids to investigation are such that 90% success in convictions. As Avnishji also said, 70 death penalties, 8,000 life imprisonments, and also what you mentioned, I wish you give me the time, I would explain what half encounters are, Operation Lambda are, but unless you have hands-on experience, perhaps you will not be able to give that interpretation. Thank you. You've really got my curiosity motor running. That much I can definitely say. Dr. Gokarn, as an administrator, your mic right here, sir, this one. As an administrator, as a former administrator, I want you to draw a parallel between what you saw when you were actively an administrator in the state versus what you see as not an outsider, but as an observer of things the way they're happening in Uttar Pradesh.
Well, thank you, Sanket, and thank you, Times of India, and good morning to all of you. Well, you saw that a budget of 9 lakh crores has been made by the state government. But it makes you wonder whether all this will actually be utilized at all or not. Because as a finance and economist person, I look at not just the budgets, but for every state, the governance, institutional, and coordination structures. What I call as GIC is probably more important than your study of what GDP or outlays per se are. So that is what transforms what is being allotted to what is being actually being used and utilized. And that is where I think our systems in UP have only strengthened under the leadership of the present Chief Minister. Earlier, it was only allocations and people stopped discussing beyond that. But today, what is being monitored is not just the allocation, but actually whether it is being utilized or not. I'll just give you a simple example. In PWD, it was very common to say that a proposal is from Ramu ke ghar se Shamu ke ghar tak. And then after 3 months, Shamu ke ghar se Ramu ke ghar tak. Nobody would be the wiser as to whether the same road is being done twice. But under the leadership of the present Chief Minister, every road in the state has got a UID. It's got almost like an Aadhaar number, where you can know by looking at a click that what is the number of that road, who is the Malik of that road, whether it is Nagar Nigam or whether it is Development Authority like LDA or PWD. And then within PWD, when last it has been taken up for repairs or for special repairs, but that is a kind of use of technology and systems. And therefore, every penny that is being allotted today, you have the traceability and trackability as to where it is actually being used. So that is what gives the confidence that whatever allocation is being made by the government is actually getting to use at all. The second is the use of artificial intelligence. People said that artificial intelligence is coming in. But UP has already used artificial intelligence. I used to be the GST head, the principal secretary and additional chief secretary. And the target for us was massive because the state wasn't getting support from the center. The allocations had come down because whatever was being deficit earlier was being given by the center had stopped. But the challenge and target was not just to meet that deficit, but give a delta or an increase to the state revenue. You would not believe it, there's a triple IT here in Lucknow. We engaged them for a small sum of 18 lakhs. To do what is called as the first artificial intelligence across our databases within GST, integrated with the NH e-way bill systems. And for that 18 lakhs, and it was automated notices generation and then getting the money wherever there is mismatch between GST returns to get that money back into GST. You would not believe for that 18 lakh, we got a return of 4,000 crores in just 1 year. So that is the power of AI, that is the power of generation of information that is there. And as somebody said, AI, it's not just data center. Data is actually oil. And the richest oil or richest data is actually with government. We should know what to use it for and how we transform it. Thank you. Exactly. Thank you. Let's just hope that the government knows how to use it, because just like oil, there is a potential of data leak as well, which needs to be addressed. But Major General Asthana, from a strategic security perspective, because that is your area of expertise, I want to know how do you look at, since Dr. Gokhan spoke about the use of artificial intelligence and how AI Pragya is being used effectively in Uttar Pradesh, how can AI and various tech innovations be leveraged to strengthen disaster management systems in Uttar Pradesh and many other healthcare systems in Uttar Pradesh? What would you like to say? Okay, before I answer your question, thanks to TUI for giving me an opportunity to give out my views. And most importantly, let me connect Uttar Pradesh with the national aim and the vision which we are looking at. Now, you would have heard so many politicians giving all kinds of jumlas as far as India is concerned. But if I have to put it as a strategic analyst, I would put the aim of India in 3 words: peaceful, inclusive, growth. And if you have to put timelines to that, that becomes Viksit Bharat 2047. And if I have to look at the elements of national power, then you have
the demography, that is the people. You have economy. We heard so many speakers speaking on economy and the way Uttar Pradesh is getting linked to the national economy. And 20% population, so therefore 20% a goal being set for the economic target, that makes sense. Similarly, then you have the military. You have technology, you have information, you have a whole lot of other elements of national power, but let me now concentrate and come to your question. You see, when we are looking at the demography of Uttar Pradesh, this demography by itself is not a strength. It has to have per capita productivity. And how do we improve the per capita productivity? Because we have the largest English-speaking young population in the world. And out of that, maximum population in Uttar Pradesh. Because if Uttar Pradesh was to be a country, it would have been 6th largest country of the world as far as population is concerned. That's the kind of demographic strength we have. But you have to innovate that strength and empower them with the artificial intelligence in every sphere. Unless you do that, the per capita productivity of the man does not increase. And if it doesn't increase, then it doesn't give you the kind of dividend which you want. Today, if I have to compare the per capita productivity of India with the per capita productivity of every single Singaporean or Chinese, it works out to about 1:5. That is the kind of gap which we have. We all keep saying that, okay, China is growing so fast, but then there is a element of per capita productivity which is required, and that is where the AI innovations, the AI skill training is required. So now to increase the per capita productivity, what is required is that you have to skill people, skill with AI in every sphere, whether it is healthcare, education, production, whether it is agriculture. Even in agriculture, the AI is important. So all these, everything, I don't visualize any single area where AI is not involved. And in that, when we skill, then we also need to increase the skill of the already people who have some kind of skill to upskill them. So it is skilling, upskilling and reskilling. And with that, you increase the per capita productivity. Now coming on to a little bigger question which you talked, a little moving away from that. See, we are looking at Uttar Pradesh in a different manner. Uttar Pradesh as a country and as a strategic analyst, how I look at it is, this is the hub of communication of the country. You have maximum expressways here. There is no reason why maximum manufacturing should not be here. Because you have to match the expressway, the logistics, the logistic hubs, the production, the innovation hubs, and all these should be at the same place. Then only it will move fast. And then, as somebody brought out, some of the panelists brought out in the earlier sessions, that you bring down the cost of logistics. Today, if the cost of logistics is 7 units in India, it is maybe, I would say, if it is 7 units in China, as was mentioned in the example given in the morning, it would be about double in India, which can be reduced much lower. And that if you co-locate everything. So therefore, these AI hubs also have to come up. The innovation hubs have to come up. We have to have, and if you look at the defense corridors, now one of the reasons why so many people ask us as to why 8 cities which were picked up for defense corridors happen to be in Uttar Pradesh. The reason is we wanted to have the manpower, the labor, the skilled labor, as well as the connectivity, the logistic hubs, and most importantly, the logistic supply chain at one place so that it connects everything, and therefore it becomes firstly seamless and secondly cost effective. So that is why most of the defense logistic hubs have come up here. And that is why we need skilling. And for that skilling, I think AI is very important, that we need to integrate AI in defense manufacturing in the defense corridors which are coming up in Uttar Pradesh. How nice. Dr. Tripathi, let's draw in from your experience as the former DGM of NABARD. I want to know from you what your experience has been and what your observation has been about affecting rural livelihood, particularly that of women in rural Uttar Pradesh. Thank you so much, Sanket, and I thank TOI to
make me a member of this panel with so many celebrated speakers, especially Dr. Vikram Singh. So coming to what you asked, is that there's a very famous quote, but I have something to add to it. They say diversity is a fact, inclusion is an act, and I add transformation is the impact of that act. And I've been the witness in terms of as an observer, as a participant, and as a part of a great organization called NABARD. So to answer to your question is that my observation has been that I have seen the way earlier speakers have told about how UP is transforming. I have seen I've been in BIRD, which is a training establishment of NABARD. So we have people from across the country. Earlier, people from Uttar Pradesh had, whenever they share, they have low in confidence. Over the period of years, I've seen how they are confident in front of those who are coming from southern states and other states. They boast of the development which UP is doing. And so far as NABARD is concerned and their intervention is concerned, and also in support with the government, you see what happens in grassroots. Women participation has increased like anything. We have those rural women who have been so illiterate. They have never seen the outside of their home. They are transacting. They become the business correspondent. They are doing the transaction. They are on behalf of bankers. They are there taking deposit. They're also, disseminating information. I see them coming to a different training establishments who are training, big senior officers. These women are coming and training them as to how rural India and especially rural Uttar Pradesh is changing. So they do post-transaction. They not only that, they are doing a lot of social transformation in terms of those evils in the rural area, maybe dowry deaths or other things. They are negotiating, they are trying to inform people. They're also creating financial literacy among the rest of the people. They are ensuring that children are going to the school of the villages. They're also ensuring that schools have teachers and coming on time. So there are so many such experiments which have happened and showing the result at rural area. NABARD with the government of UP has done in terms of skilling, as sir was mentioning. So skilling is that there are women who are given entrepreneurship training. They're also given market linkages. So we have a stall in the mall facility where NABARD sanctioned them, facility to be to take their stuff in the mall. So entrepreneurship training, capacity building is what has happened at the level of field. Not only that, digitization has eased them a lot. So they use, those POS machine, and I just share with you just quickly an example of, they go different states. I'm talking of women of UP, who just neighboring district who have told their stories time and again that they have never seen anything outside their home. Nobody believed on them. So they've gone out to Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and other places to teach people as to how rural India and rural UP is changing. And people are mesmerized. I'm talking very senior officials who come to our institute, they get mesmerized. Initially, they take them as if, what this rural person will come and teach us. But this woman comes, takes the pen on the board and start telling everyone that what exactly is she doing and how she is transacting. She has a POS machine in front of her, and she said, you have Aadhaar-enabled system? So the person says that it can be general manager of anywhere, or maybe chief general manager of anywhere. They take initially them very lightly, but then she says, tell me, will you want any money? So they try to test her, and they say, okay, you get me 5,000 withdrawal. She does it with confidence, gives them receipt, and gives them money as well. So that's just one thing that I shared. I have so many things to share, but then given the paucity of time, probably, thank you so much. How nice for you to share this experience of yours. Major General Datta, you are the Executive Director and CEO of AIMS Gorakhpur. Right, thank you. We are discussing, no, you say thank you to me, I have nothing to do in this. No, apart from complimenting you. I'm thanking you for introducing me to the audience. Major General Datta, this whole segment is called innovation, right? So
I want to know from you your experience as the head of AIIMS Gorakhpur. What is the innovation that you have deployed, employed, exercised there? Okay. Thank you once again, Saket, Times of India, for giving me this opportunity to be a part of this established, esteemed panel. Well, innovation in healthcare services would actually mean bringing the healthcare system to the patient. The services should be brought right up to the patient's door. So as AIIMS, I have been working in AIIMS for the last 1.5 years or so. So we are trying our best to do that by, we have these Ayushman Arogya Mandirs, which are the health and wellness centers which have been started by the state government. And in this, we have NCD, what do you call it, screening, that is the non-communicable diseases screening. Then we have elderly care, elderly health care. Then we have palliative care. And apart from that, many preventive screenings we do for hypertension and diabetes. All this is done in these Ayushman Arogya Mandirs. These are called as the AAMs. And UP has got at least 22,000 of these kind of mandirs. So AIIMS is also a part of it. And apart from this, we have got mobile clinics which are there in Uttar Pradesh, which are actually medical mobile units, which again bring the patient-centered healthcare services right to the remote villages. Apart from that, we have these hospital on wheels. These again, they are very few, but they also have patient-centered services brought to the remotest areas in the state, and AIIMS as such thinks that innovation in total, it means basically you can take it in context of it's a context in the sort of patient care services being brought right up to the patient's door. This is what we do, and we intend to do it by many other means like telemedicine. Then we have surveillance services which are going on in the villages, by which we get these patients to be counseled on various kind of diseases and give treatment to them. And here comes in AI also, where we have doctors in the district health care centers which can have a screening through AI for the diseases for the patients and accordingly counsel them or give them referrals for the hospitals if required. जी, मनोज जी यहाँ पर हैं। मनोज जी CEO हैं ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के, और मुझे लगता है कि आपका जिस तरीके का मैंडेट और काम है इस मंच पर, हमेशा एक ट्रांसफॉर्म अगर आप करना चाहें तो हमेशा एक गुंजाइश रहती है सुझाव की। तो यहाँ पर लेट्स ड्रॉ इन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। एक मिनट का समय मैं यहाँ से देना चाहूँगा, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ सुझाव देना चाहें तो। 1 मिनट का समय पूरा, विल टेक अ सर्कल। 30 सेकंड में मनोज सर, मेरी गुजारिश ये है कि आज अगर IT हम इलिटरेट है तो हम बिल्कुल, आई एम ऑफ नो रिलेवेंस इन द पुलिस डिपार्टमेंट। आपने AI इंट्रोड्यूस किया, आपने मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस किया, आपने रोबोटिक्स, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक हमारा अप्रोच है, 100-200 साल की डकैती में 100 करोड़ की लूट, आज 56,000 की करोड़ की डकैती डिजिटल रेस साइबर क्राइम की है सर। तो हमें साइबर क्राइम को फोकस करने के लिए अपने पुलिस को एनेबल करना होगा। इस पे जरा विचार कर लेंगे सर। डॉक्टर गोकर। वेल, ये सबसे रिचेस्ट यदि डेटा किसी के पास है तो सरकार है। चाहे वो जिस भी प्रकार का डेटा आप चाहिए, लैंड रिकॉर्ड का हो, टैक्सेशन का हो, हेल्थ रिकॉर्ड्स हो, हर चीज़ का डेटा है। लेकिन हम लोग हमेशा साइलोज में काम करते आ रहे हैं।
वी डोंट टॉक टू ईच अदर, अपना डेटाबेस हम लोग शेयर नहीं करते। जैसे माइनिंग का डेटा यदि उठा के जीएसटी में उठा के दे दे और उसमें देखे कि भाई कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का ट्रक माइनिंग से गया है, तो आपको माइनिंग का जो आधा माफिया है वो ख़त्म हो जाएगा, कमर टूट जाएगी। तो जो हमारे साइलोस में डेटा है, इफ़ वी आर एबल टू हैव अ सिस्टम टू मेक दीज इंटरऑपरेबल एंड टॉक टू वन अनदर, तो जो रेवेन्यूज़ और जो सिस्टम्स हमारे गवर्नेंस के हैं ये एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ गया। तो वो डिजिटल अरेस्ट जो हो रहे हैं उसको लेकर के आप किस तरीके से अपनी पुलिसिंग को बेहतर करें और डेटा साइलो में ना हो, ये दो सुझाव यहाँ पर मनोज जी के लिए है। मैंने देख लिया सर ने खट से कुछ नोट्स भी बना लिए, इसका मतलब आपका सुझाव वहाँ तक पहुँच गया है। जी मेजर एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये IWT सिस्टम, इसके ऊपर डेवलपमेंट थोड़ा किया जा सकता है। जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है रिवर्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन इसमें गुंजाइश है और इसमें स्कोप भी है अगर देखा जाए तो इसको आप। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस की बात हो रही है, अभी थोड़ा ब्रॉड बेस्ड है। हर एक चीज़ में AI है तो हर चीज़ को AI माना जाता है, बट इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। इंस्टीट्यूशनलाइज से मेरा मतलब है कि जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये इस चीज़, इस AI के इस एप्लीकेशन के इस सेगमेंट के लिए ये इंस्टीट्यूशन जिम्मेवार होगी और इसका ये टाइमलाइन होगा। अगर ये ऐड किया जाए तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन और फास्ट हो सकता है। मैम Yeah, just two suggestions within the time given. One is that at grassroots level, when the crime happens and through Mission Shakti, a lot of disposal has taken place. Nevertheless, follow-up is something which becomes many times a casualty. So follow-up is very necessary for everybody to get an access to that police facility. This is one. Second, there is something called as local committee, which comes under POSH Act, which is Prevention of Sexual Harassment. So local committee, UP has very big informal sector. So this local committee is there digitized and everything, but meeting has to be ensured, which many times doesn't take place. Second thing is that, there should be some budget, maybe, if not there, I may not be very clear about it, but it should be allocated with DWCD so that they ensure that this happens. And the awareness about LC and everything should be. Awareness is some mindset change is one, is what I feel should be there. Major General Datta. Well, I feel that AI as such in healthcare would be of great importance, and we can use AI basically, like I said, for telemedicine, and it becomes very convenient for the patient that they don't have to come to the hospital. It helps in sort of avoiding duplications in investigations and reducing the cost even for the patient as well as for the hospital. I think these are the things how AI would help. जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर गोकर्ण, मेजर जनरल अस्थाना, डॉक्टर त्रिपाठी, एज वेल एज मेजर जनरल दत्ता। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा आप लोग मंच पर ही रहें। और अब वक्त है हमारे सभी डिग्नेटरीज को फेलिसिटेट करने का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इट वाज अ इंसाइटफुल डिस्कशन एंड नाउ टाइम फॉर द फेलिसिटेशन। Give a huge round of applause for all our dignitaries. So it was an insightful discussion. We heard about one district, one cuisine. Thank you all our dignitaries for एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.
So it was a really insightful discussion. हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के बारे में बात सुनी यहाँ पे और मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता बिकॉज TOI यूपी ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कहीं ना कहीं पे यूपी की उस जर्नी को आपके साथ साझा कर रहा है. पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ पे इस मंच पे जो कि लगातार आपको बता रहे हैं अलग अलग पैनल डिस्कशंस में दैट हाउ उत्तर प्रदेश इज ट्रांसफॉर्मिंग. Now, in this discussion, we have also talked about AI Pragya. And this, I think, AI technology is something how the state is preparing its workforce for tomorrow's technology. And, you know, innovation in Uttar Pradesh isn't just about technology. It is about making that technology work for 240 billion people, ensuring inclusive and sustainable growth and reaches every corner of the state. Now, moving forward, we have a very special guest with us, Mr. Amit Kumar Ghosh, who is an IAS, Additional Chief Secretary, Medical Education Department, Uttar Pradesh. Sir, can we please have you on stage for the special address? Mr. Amit Kumar Ghosh. Give a huge round of applause. Who's going to motivate us? Thank you. Thank you very much. Respected Shri Manoj Kumar Singh Ji, CEO of the State Transformation Commission, other distinguished and senior guests present here. In the previous panel, I was very delighted to see our former DGP and our former senior colleague. So, you know, this conversation which just happened represents both continuity from the past and, you know, the way ahead into the future. Let me just relate one, just for the, you know, sir, I want to begin with an anecdote. In 2009, I was district magistrate, Lucknow. So, when my super time came, the chief secretary was kind enough to ask me, what do you want, where do you want to go? So I said, sir, please create a new post of Commissioner of Information Security, UP. And Mr. Atul Gupta was like, he was such a kind person, he indulged my, and I kept speaking about how we need information security and whatever I had read about it. And he said then very gently that probably you are speaking a little ahead of time. Abhi, we will post you somewhere good, and then when you come back, you can become the Commissioner of Information Security of UP. As luck would have it, I went off abroad, and then when I came back, I was in NRHM for nearly 4 years. And then I went to Government of India, and I've come back to health. So probably health is the topic that today Arpit and Shalvi, Anil, everybody has given me, for which I am really grateful to them. I made a request that I may be allowed to speak and go because the house is going on and I have to sign a lot of answers to questions from the Legislative Assembly and the Legislative Council members. Sir, after coming back here, ladies and gentlemen, I really feel proud. I was thinking at that time, 2012 to 2016, that I had done a lot of work in health. But truly, it is when the state moves that transformation comes about. In the 8 years that I was away, the state moved decisively and very strongly in the health sector. I mean, just in the last few years, since 2022 when this government came again, UP has witnessed rapid improvements. Of course,
at the helm was Mr. Manoj Kumar Singh, who is here. And between 22 to 25, with the state budget, we created a large number of hospitals at different levels. Today, sir, we have 300 hospitals which qualify as district hospital, stroke district women hospital, which was the tradition from pre-47 that every district would have a district hospital and a district women hospital. And now we have some what we call special hospitals, which are, 100 bed, 200 bed, 300 bed, some places 500 beds. So now we have a large number of schemes, both from the state government and the central government. And it is not my place here to recount the names of the schemes, but to tell you that I was very pleasantly surprised. I said when I joined, the first thing I said, we will do state review missions. We have done 10 divisions till now. And we did it on the ODK, Open Data Kit. So website, everything was uploaded from mobile directly to the website. So they came up with 120 parameters. And one of them was dialysis units. Sir, today in every district we have dialysis units. And just yesterday, during the course of discussion over the answers to be given in the House, Honorable Deputy CM directed me that let's increase. There should be no waiting even for a day for somebody seeking dialysis support. So I'm happy to tell you that I'm already on the job since yesterday, and we will be significantly expanding. And we now want to go to designated CHCs also with these dialysis units. If you see, it is amazing. People used to commute to large towns for dialysis. Today you can get it done in a place like Gonda, Basti, Mirzapur. I'm just recounting district headquarters. But even at lower levels, some facilities, Pilakhua, you can get it done, which is not a district headquarter. So I'm happy to tell you that UP has moved decisively towards creation of those facilities which connect directly with people who are facing health issues. Let me also share two good news with you. We are going to set up the state cancer mission and work decisively, because I think the time has come when we have to recognize that Major General Madam was speaking, Major General Dutt from AIIMS Gorakhpur. We have to recognize that, while we are doing screening of breast, cervical and oral cancer at all our CHOs, she gave a number of 22,000. But we have to close the loop. We have to actually go the last mile. What happens after screening? Is everyone getting the right diagnosis? What happens when you are diagnosed with the problem? Are you getting the treatment? If you are getting the treatment, what is the waiting time? I wish to track every patient in the state of Uttar Pradesh. Because in cancer, the mantra is early detection, early treatment significantly raises the chances of survival and good life after treatment. Similarly, on the lines of the state National One Health Mission, we are launching, and it has been allowed in our budget, the State One Health Mission. Thirdly, under the able leadership and guidance of CEO Transformation Commission, Mr. Manoj Kumar Singh, a conference was held. You see, long back I was invited when the TSU was formed here with the support of Bill and Melinda Gates Foundation, now only Gates Foundation. Bill and Melinda has been removed. So the Gates Foundation, they had invited me to deliver a lecture in University of Manitoba in 2013. And I'd given a discussion, made a presentation on bending the curve. Happy to tell you that today UP has more than halved the MMR incidence.
But is that enough? We are still at 141. That is the maternal mortality ratio. In developed countries, it is 2 digits, low 2 digits. So if we do what I call business as usual, we will be hitting 80 by 2030 if we go the way we are going now, and we are working hard. But what if we started tracking every single high-risk pregnancy? What if we started 53% young adolescent girls are anemic? They are going to be the young mothers. So if we track every case of anemia in adolescent girls, we need a huge system. So there was this discussion not many weeks ago, led by CEO Transformation Commission, and we decided that we shall now bend the curve for MMR. So we will have the MMR mission also. And we look forward to guidance from the State Transformation Commission. My colleague is here, Dr. Pinky Jowell. She is the Mission Director of National Health Mission. She has already given me a template. This template has got two parts. One is targeted tracking, targeted medication, supplementation, targeted care, and then an overall AI-enabled life cycle approach under which we will make sure that every girl child above 10 years of age, and I say above 6 years of age, if anemic, is given the proper supplementation at the very right time. Very small thing, sir. What we have done, ladies and gentlemen, any lady who is coming now for ANC, on the suggestion of my colleague Dr. Pinky Jowell, we are giving them, you come, you will get some supplementation of diet on that day when you come. The State Transformation Commission has asked us that if there is one high-risk pregnancy, do 9 antenatal checkups, not 4, as we are doing now, for everyone. That will involve huge mobilization, huge tracking, huge data generation. So many data points will be there. With the same manpower, how will we do it? So we have to go the way of the digital and AI, as was being discussed in the previous session also. Why am I speaking so much about MMR? Because neonatal mortality and maternal mortality, they are truly the bedrock of public health and true indicators of the progress of society. If we cannot protect our young mothers and they are dying while giving childbirth, and we cannot prevent the death of the neonate, the newborn within the first 1 hour, that is one thing, and the first 24 hours, that is the second thing. If we cannot do it, we cannot say that we have transformed UP. Transformation of UP with our expressways, our waterways, our airports, educational infrastructure is a must. But that can be done. But how do you make sure that that newborn who is being born at this minute while I'm speaking in some remote place survives? So in my discussion, 3 months ago, the Gates Foundation team had come. In my discussion with them, we have decided to make the intervention from T0 when the child is born to T60, and then T1 hour to T24. We have to track each and every such birth because the NMR also remains unacceptably high for a state which is poised for transformation across all sectors. So, also happy to share with you
that we have constituted a task force on emergency and trauma. We will double the beds for trauma in the next 5 years. The plan is ready, and we will develop 10 L1, like KGMU trauma, 10 L1 trauma centers we will develop. That is the kind of intention we are having. We've also set up a task force on modernization of OTs and surgical practices in government hospitals and government medical colleges, including the newly opened 28 autonomous state medical colleges. This task force, with experts from all the top institutes of the state like PGI and RMLI and KGMU, will work on the hub and spoke model to ensure that the best of facilities for surgery are available across the states in these medical colleges. So medical education is poised for transformation also. Not only trauma, but medical education also. Thirdly, we have decided to walk step in step with the government of India. They have given us a challenge, and we have picked up the gauntlet, that is to make TB-free Uttar Pradesh. The call has been given by none other than our Honorable Prime Minister. He has himself held a review and given the nara of TB Mukt Bharat. In accordance with that, we have made a nara of TB Mukt Uttar Pradesh, and we have accorded it the highest priority amongst all the national programs being implemented in the state. So we wish to state that transformation in medical and health sector will take place through our HR, through our own people. Nobody will come from outside. We have to do it ourselves. So we have to take our message to each and every member of the medical and health community and make them strive towards professional excellence. At this stage, it is appropriate that I also delve upon our plans for the private sector. We have with us a very large number of, I'm just finishing there, very large number of private hospitals, and they are empaneled with us, and we spend about 4,000 crore, which we give to them under the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana. So I have asked the State Health Society, State Health Authority to give me a plan to make sure that the standards in all these hospitals get monitored, and nothing is going to happen overnight. We have to go the incremental way, but we will engage with them positively and make them improve their services. So for that, we have constituted a task force. It has met. I have reviewed. The report is in the making. The Clinical Establishment Act for UP will soon be, I hope this year, with the concurrence and cooperation of all the stakeholders, will be implemented this year. So these are a few of my thoughts on what could be the pathway to transformation. And I'm really grateful to the organizers for giving me this opportunity to speak a little in advance and leave because of the ongoing legislative session. Ladies and gentlemen, at this stage I would like to say, I was hearing General Asthana, artificial intelligence is something whose time has come, and we had held the Health and AI conclave over here. From 16th, the National AI Summit is taking place.
please register. It's there from Monday to Friday. Those of you who can go to Delhi, I was talking to my colleague, Mr. Bhuvnesh Kumar. Please go on the website. There are different sessions. You can register for different sessions. From the health point of view, please register for health and AI session in Delhi and do attend that. Let's make the inclusion and incorporation of AI into our working the mantra for future. Thank you very much. Thank you, Amit sir. It was really insightful. And before we move forward, if any one of you are posting today's night, then let me inform you कि आप hashtag UP Transformation Dialogues इस hashtag को use करना मत भूलेगा. Now moving forward, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में नवाबों की नगरी तो है ही, लेकिन तहजीब की एक अलग पहचान के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र भी बन रहा है. Now, our next panel discussion is all about healthcare. Healthier, capable Uttar Pradesh. Like, moving forward, this session explores how policy initiatives, infrastructure expansion, and public-private collaboration are strengthening healthcare delivery across Uttar Pradesh. And for this session, I would like to invite Dr. Zakari Adam, who is a Chief UNICEF Uttar Pradesh. Sir, please can we have you on stage? Dr. Pinky Joel, who is an IAS, Mission Director, NHM, and Secretary, Medical Health and Family Welfare, UP. जोरदार तालियों से स्वागत करें. Dr. Sanjeev Bagai, who is a Padma Shri awardee and Chairman, Nephrons Clinics. Give a huge round of applause. Dr. Arvinder Singh Soin, who's a Padma Shri, Group Chairman and Chief Surgeon, Medanta Liver Institute. Give a huge round of applause for all our dignitaries. And may I please call upon Sanket. Sanket Upadhyay, our senior journalist. Zordar Talia. Sanket, stage is all yours. Thank you so much, Bhavna. In the previous session, we briefly touched upon health, and this session will be a deep dive into what transformation can happen in the health sector. So thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us. I want to first begin by asking Dr. Zakir Adam, as the Chief of UNICEF in Uttar Pradesh, how much of Hindi, Avdi, Bhojpuri, Maithili, Braj, this is a huge state. Does the state come as a rude shock, surprise, a pleasant surprise? What does this state do to you? The mic, please. Thank you very much. हिंदी बहुत कठिन है मेरे लिए at least. तो मैं सीख रहा हूँ थोड़ा. Fantastic. That, you're brilliant. I'm happy to be here. Well done. But seriously, the expanse of this state, when you came here, when you were deputed here, did you, of course you must have known about the state, how huge it is, but when you look at the diversity, the challenges and the opportunities, how are you managing, how is UNICEF managing with its mission? Not very straightforward, but also really exhilarating for UNICEF, because as UNICEF we are a supportive agency. So the real secret of going forward is to invest in partnership, is also to know that really from what I've seen in Uttar Pradesh here as compared to many other countries where I worked, there is a strong leadership. When you are working and supporting people who know where they are heading to, that is making it very, very much easier than for you to. So the driving seat is there,
and the leader is there. So the technical support is made very straightforward. How nice. Yeah. Dr. Joel, as the मिशन डायरेक्टर फॉर एनएचएम, सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमने देखा अभी डॉक्टर घोष ने भी काफ़ी उल्लेख किया आपके विजन का, आपके काम का. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या हैं इन इम्प्लीमेंटिंग एंड एक्सपेंडिंग हॉस्पिटल्स एंड स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेस, particularly in rural Uttar Pradesh. In the last few years, NHM is taking a leap forward in the sense that we have made a strategy how the gaps to be filled. So if we see in 2017 and 2025, all the parameters, indicators, there is a very good jump. But still we need to reach to the level where we talk of health for all, a universal health. So we are working on 4 different strategies. First is that saturation is an issue. There is lots of gaps in different arenas, whether it is infrastructure, diagnostics, your human resource availability, quality medicines, and further progressing for the future, like new addition is an AI. Saturation is one aspect. Second is making the things functional. We have lots of facilities, especially in rural areas, making them functional actually. Filling these gaps, using these gaps. Once they're functional, then there should be quality in that functional aspect. So third is a qualitative improvement. So we are working on quality, like NQAS certification, National Quality Assurance. They give us certificates on the state level. So I can just tell about the health department's achievement is that it was in a single digit in the last 2 years. Now our facilities are approximately 9,000 facilities are NQAS certified, state as well as national, including both. And the fourth one is after quality, we want to expand further, and that has to be sustained. See, once you get a quality certification and then it goes back, it's of no use. And then the latest technologies, upgradations, we have to think, merging the primary sector from the rural point of view. Abhi Dr. Major General Datta has spoken about Ayushman Arogya Mandirs. At the population of 5,000 people, we have one Ayushman Arogya Mandir with the CHO posted over there and an ANM. So quality services if we can give to them. We are thinking of a general practitioner point of view in the futuristic point and incorporating AI into it, and our IT enabled services like teleconsultation is there in each and every Ayushman Arogya Mandir. Approximately 75,000 teleconsultations are given in a day. Then NCDs, the futuristic disease patterns we have to study, like NCD, diabetes, hypertension, heart diseases, kids having issues in behavioral issues, mental health, geriatric, palliative, our environment related issues. So climate changes are there, leading to lots of different diseases. Zoonotic disease, the One Health mission has come. So we are working on the futuristic and simultaneously in the lower level, and simultaneously towards the centers of excellence at different levels, which my ACSR has already spoken about it. Various missions we are thinking of. Cancer, MMR, thinking of NMR, including emergency. The maximum deaths happen because of the accidents. So ambulance services, and along with the ambulance services, the trauma care centers are important. So it's a holistic thing. We have still a long way to go, but we have improved a lot in last few years. So primary is the base. If we can really make our schemes percolate to the lowest strata for the society, in that society, to the marginalized sections of the society, to the women, to the children, otherwise ignored. So that is our basic agenda, and it is tough, complex, but achievable because we have a very good team. We have the blessings of Honorable Chief Minister. He has given us freedom to work. Our Deputy Chief Minister, sir, has given a freedom to us to work in the future. We have increased our budgets. Let me tell you, this first time we have got 1,000 crore has been increased in specific components of the new schemes. It has never happened in India anywhere that NHM has
got funding from the state fund. It's a good thing. Our Honorable Chief Minister has requested Government of India for increasing the budget of NHM. This is how we are sensitive about the things. If we can make the universal health for all, not on an equitable basis, based on the equity, so I think that is the vision we have for us in the long run. And we are working with our partners like UNICEF, WHO, UNDP, and other partners. The approximate 38 partners are working with us. Private partnerships we have included like dialysis, CT scan. We are working on very other different new patterns. Hospitals has been given to the private partners like MCH wings. MMR has been reduced. Let me tell you, 2017 it was 216. Now with the latest SRS data it is 141. And the State Transformation Commission, Manoj sir has instructed us to, we have to bring it to single digit. We have to beat Kerala, which have, the state have 18. So that's how we are working on a very strong mission mode. Hopefully with the guidance and the support of all, we are going to achieve something good. Thank you. It's interesting that you say this, Madam Joel, because for any state to progress, the health and education budget must be a priority. So when you say that the health budget has seen a boost, is definitely a very encouraging sign, I must say. Thank you so much. Dr. Soin, AI seems to be the buzzword in almost anything. Its use in healthcare, medicine, and a role of private players. You see, international government will do its bit, but then private participation is also equally important. So I just want to know, what can you share from your experience on using technology to make a more sustainable and a better healthcare system in a state like Uttar Pradesh? Thank you, Sanket. Thank you, Times of India, for having me on this panel. So, if you're not adopting AI, you're really going to be left behind, and you really don't belong to this world. Everybody understands that. But really, it's, you know, I was listening to this podcast by Boris Chernby, who's made the Claude AI engine. And he says it took him 2.5 years and 25 engineers to make it. And today it would take him 5 engineers and 12 months to make it. And after 6 months, it would take him 1 engineer and 3 months to make it. So that tells you how human resource can actually be used more effectively with the use of AI to ease every workflow in life, including healthcare. And it'll also democratize access to healthcare. So specifically speaking, let's say I work in a tertiary care, quaternary care hospital. So in our system, AI has actually percolated into a lot of spheres. So diagnostics, specifically endoscopy, pathology, in preparing notes for patients, in preparing operative notes, discharge summaries, the voice to text, the ORM platforms, we use them routinely. AI is also used for algorithms in research and working out what molecules work best in cancer or any other kind of research. So research labs use it all the time. It's called something like Alt-F. So that's the thing that people use to earmark or target the kind of molecules they should be researching on. It is also used for post-operative care monitoring. It is actually percolated into literature search and making PowerPoint presentations. It's basically there everywhere. And I think that if you want to basically progress in 2026 at the rate things are going in every other field, AI in healthcare has to be completely integral. What private institutions can actually do is, what we are good at is operational and management skills and excellence. So we can share that. We are good in super specialty care with or without the help of AI, and we can actually leverage that for public-private partnerships. As I gather, UP is already proposed to set up some medical colleges with PPP models, so we can actually leverage our expertise there. And also,
I mean, I'm a liver transplant surgeon, for example, so I helped the All India Institute of Medical Sciences, which is my alma mater, to set up liver transplantation. We could do such things for government institutions here, because when private enterprise combines with public, then there's obviously scale in terms of patient volume, and there is sharing of resources, which cuts down the cost. So access can improve, quality can improve, and the cost can be actually reduced. So it doesn't mean that if you take private care specialists, they will charge a bomb. It doesn't have to be like that. I did the AIMS program, liver transplant program pro bono for about 9 years. So all of us have that sentiment in us, and we'd love to be involved in teaching, in research, and in super specialty clinical care. Not many people would know that Dr. Bagai right now is in his place of birth. He was born in Lucknow, so how does it feel to be back? Thank you, the organizers, for inviting me. So Lucknow is where I was born, so it's been a journey since. Land of untold opportunity, UP. A lot of them still to be achieved, but mystery, good food, great culture, great heritage, great people, and let's dig straight into this. Absolutely. Over to you. Absolutely. You have been speaking and have been an open advocate of innovation in health technology, right? You've spoken about it a lot. You also talk about cities becoming medical hubs for medical tourism. How does this help and how does this work? Okay. So I think it's important that everyone in the audience and all the viewers who are watching this understand what the journey of UP has been. So 75 odd districts, 25 crores, it would have been the 5th or the 6th largest country if it was standalone, so to say. 30,000 medical facilities, 208 teaching colleges, out of which 80 odd are medical colleges, 4,500 ambulances, 75 out of 75 districts have hemodialysis. I mean, that's some kind of achievement in the last 10, 15 years. This kind of rapid progress is rarely seen in other parts of India. 74 out of 75 districts have CT scans with not much waiting. In fact, this outdoes even Delhi. It is the only state which has 2 AIMS. One in Gorakhpur, I had the fortune of visiting it last year. It's come up beautifully. I think the one in Lucknow is coming up soon. It has 11,600 medical seats out of 1.2 lakhs and about 17,000 hospitals, out of which 73,000 doctors and almost 3 lakh medical beds. Now, when you look at the healthcare indices, when I was researching for this talk, UP stands number 9 amongst 36, so that's not bad for a state which is so populous and so widespread. 4 or 5 things which I would like to mention where we can go further. So, I'll give you 2 very quick examples. There's a place known as Pittsburgh in US, and there's a place known as Ohio in US. So University of Pittsburgh is now one amongst the meccas of teaching and education and medical. And Ohio is again a great place where lots of universities have come up. So Pittsburgh was the glass and steel capital of the world till the great crash happened and then the world wars came. After that, they thought how to bring about the economy of the entire region in the city. So it took them good 15, 20 years, but today they are the medical and educational hub. They call themselves EdMed. They have 29 standalone teaching hospitals in a small place, smaller than UP and smaller than Lucknow. And Ohio is a place, I don't know if anyone would know, is where the word Jeep was coined, the SUV. Jeep was coined after World Wars was in Ohio. And that industry crashed and again they went into EdMed. So UP has land, UP has talent, UP has resources, UP has Aditya. G. This is a place where you can make educational medical cities. Not only for medical tourism, but understanding that healthcare is the largest employer in India outside defense and railways. A
a standalone 500-bed hospital employs 2,500 employees, including doctors. One bed is 5 employees. So you can actually create employment, give healthcare to the local region, attract patients from across the world. International medical tourism in India is booming. Dr. Soin will bear me out. We have more than 2 million patients coming in every year. 13 billion is the exchequer revenue into India every year. So this can be doubled, this can be tripled. So second important point is that we must embrace technology. It's a no-brainer. AI gives you operational excellence. It gives you a better ROI financially. It gives you a better patient experience, the customer experience, the client experience, the patient experience is better. It gives you error-free medication. So human errors or calculation errors goes out of the window, and hospital-induced infection or hospital-acquired infection goes down. So there are lots of benefits of technology and AI, what we call as digital smart hospitals. And lastly, most importantly, no state, no country can progress. Our aim together combined is 2047 is to be Viksit Bharat. Some of us will be alive. Our next generations will be alive. The mental state of children, adolescents, teenagers, and women especially is extremely important to address. And in this regard, I must add that from Delhi, starting next month, I'm starting a standalone venture which is addressed on mental wellness and well-being of adolescent, teenagers, and women. And it's under the name of Zen Ray. Zen is the next generation. Ray, R-E, is ray of light. It's universal brightness, universal light. And in this context, I think we must understand that 14.5% of all Indians have some sort of mental disorder. 15% of all women postpartum have depression. I think it's important to address this, bring the skeletons out of the closet, and it's okay to say, I'm feeling low, I'm not quite well. It's very fashionable to say, I have a cough. Someone will say, have you got a pulmonary function test? Go to a pulmonologist. But it's not that acceptable still in this part of the world to say, listen, I'm feeling low. Can I go and see a counselor or a psychologist? I think that stigma, that isolation, that fear, the feeling of being unwanted, the feeling of being sidelined from the main society has to be spoken about and demolished. Unless and until India is not a mentally strong nation, we cannot become an economically superpower. And I think in this regard, I would love to partner with the government of UP to take this forward, pan-UP. Mental health, physical health, women and children. 36%, I'll just take 1 minute more, 36% of Indian population is pediatrics. And beyond the adolescent age, 30% is women. If you're only looking at what we call as WSC, that is women and children, you're capturing 68% of the Indian population. That needs attention. A healthy child is a healthy adolescent, is a healthy adult. A bad pregnancy in terms of health is a premature baby, low for birth weight baby with huge amount of complications in terms of organs, and you are catching up for life after that. So it's prevent, early diagnosis, early intervention. Mental health is a thing which UP must focus on. Would love to partner with you all. Over to you. Okay, yeah. Dr. Soin wanted to. I just want to add to how health and economy are so interrelated. Everybody's saying the same thing. So health, I mean, obviously, if you don't have healthy humans, there's nobody to do work to actually help the economy. So health is basically a foundation to any economy, and if people are healthy, they'll be productive, there'll be less work days lost, they'll be more cognitively alert. They will be basically the, they will actually produce they'll be contributing to GDP much longer, so they will be having a much more longer economic life. So health and economy are very, very closely interrelated. The other thing is when people from abroad, when countries or institutions want to set up tech hubs and plants and factories, they actually look for places where there's good health care for their employees. So there is that security that they seek, and that's why healthcare, good healthcare, not only attracts medical tourism, but it also attracts good talent and capital for the economy to grow.
Just 5 seconds. If you combine what Dr. Soin has been saying, all of us have been saying, you combine medical tourism with recreational tourism. I mean, look what Ayodhya has done. It's a go-to destination. Raebareli, Lucknow for that example, Gorakhpur for that example. Convert one major city into a recreational and medical tourism hub, and you'll see UP as perhaps #1 state in India, or perhaps Southeast Asia. I can see her very diligently noting everything down, so that is a good sign. Yeah, you tend to forget. Dr. Joel? Whatever you fix it while writing it, then Yeah. it get fixed there. So, But these are valuable suggestions. Yeah, Dr. Bagai, आपकी बात के लिए I'll just extend that mental health. We are focusing on it very strongly. We have established a telemanas consultation place on. It's a telephonic one. The toll-free number is 14416, and we are getting almost 500 plus calls per day. And our member Niti Ayog, Dr. Vinod Paul sir, has tried from Delhi, and he called that just to check it whether it's working or not. So he praised us, and he gave the third prize to us in the sense by just getting a call from him, the kind of response he had got it. And same way our ACS sir had checked it. The person was not disclosing what is his name, and we were praising him. You tell us, you give such a beautiful explanation of how you have to go about it. So we are aware of it, and recently we have thought of having a second NIMHANS kind of a situation, organization in UP. So we have requested NIMHANS to come and just give some mentorship to us. They are already with us in different aspects. We have lots of counselors in different schemes, and that is the focus for us, because I agree with you, a healthy individual is a productive individual, and then it is an asset to the country. Secondly, I agree to the medical tourism concept also, and government is already working on it, and different PPP models as well as the districts they have already identified, they're working on it, and then agreed we can be a good hub for Middle East or for African countries or the other neighboring countries of Southeast Asia. At least we can start, and we have a good future. I have worked in Tamil Nadu, and Tamil Nadu have really worked on this medical tourism. So they have very good capacity. From Haryana, I have seen in Gurgaon. So we have a good scope, and we have a vision too, and the leadership has given us a freedom to think big and think ahead, and we should be the leader. We have a vision 2047 document, we had made it, and we are working how to make it actual, to come on the, not on the paper, come in the field itself. Out-of-pocket expenditure, you linked with the economy, so out-of-pocket expenditure reduction is the biggest target, which is the PMJY, Ayushman Card Yojana is there. Our budget has doubled from the last year. It was almost 13 to 1500 crores, and now it is 3000 plus crores. And we are expanding further, and the beneficiaries have doubled than the last year. We have enrolled various service staffs from our government setup, like ASHA, they have been included, and we are working on other sections of the government employees who are really poor. Our upgradation in the medical colleges, I don't see the medical colleges, but I would like to represent it. We have 81 medical colleges now, and the quality is increasing. Definitely we have a shortage of specialists and super specialists. I think in the next coming 5 years, UP will be the leader in health. This is what I feel. Wow, fantastic. My final question to Dr. Adam. How does something like an Ayushman Bharat align with the work that you do at UNICEF? It is fully aligned, because this is about health prevention in terms of security, of financial security for families. And to correlate it with what was said precedently regarding the prevention, it is very important that early access to health is really taken as approach by families. And when they feel secured financially, they feel happy to go to hospital. It is also important that it is helpful in terms of referral. They are referring much more than previously. And all effort put together, including Ayushman Bharat, I think is resulting into the
expansion that we have seen in terms of institutional delivery, for example, where we jumped from 68% to 83% from NHS 4 to 5. This is a progress. We have seen also increase of 20% in terms of immunization. You know, immunization is one aspect, very cost-effective intervention to safeguard the children. Since we are talking of a future, here in this room, I think that the majority, we have already consumed more than 50% of our lifetime. And when we are talking of future, it is basically about children we are talking. So for us to ensure that the future of Bharat is really ensured, it is good to invest in children. This is why for us in UNICEF, primary health care, rural care, is critically important. Critically important. And that also correlated with Ayushman Bharat. We can see that this one is going mostly for secondary and tertiary support. When on primary level, we need more effort. And finally, let me comment quickly about equity. Equity, and that we will say it again. I used to fight my technicians, health workers, when I hear them talk about hard-to-reach communities in terms of access. I say there is nothing like hard-to-reach communities. Maybe we are the ones that are hard to go where communities are. What I mean here is that in terms of our policies, our strategies, our way of doing things, we really need to improve as duty bearers to ensure that quality is there. It's not only about numbers, figures that we are very happy to see, but we are also improving to ensure that unserved communities are touched with all these efforts we are having. Thank you. Nice. Thank you so much to all the doctors for joining us on this panel. Thank you. And now it is our privilege to felicitate all our dignitaries from the health sector, because it is all their vision and dedication which is helping Uttar Pradesh to transform. Give a huge round of applause for all our dignitaries. And that was really an insightful conversation. और कहते हैं ना, जहाँ का हेल्थ सेक्टर मजबूत हो, उस शहर की दिशा अपने आप में एक नया रुख ले लेती है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Thank you very much. Thank you very much, all of you. Now moving forward, but before, I think this platform is giving a vision to something that we all are aware of. But आज की डेट में उत्तर भारत सारी बातें की, अलग अलग पैनल डिस्कशंस में हमारे सभी दिग्गज आपको आपके साथ वो जर्नी तो साझा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमने AI की बात कर ली, टेक्नोलॉजी की बात कर ली, हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर ली, बट नाउ इट इज़ टाइम टू टॉक अबाउट द वुमेन्स सेफ्टी. Yes, the women's safety, from safety to leadership. And for this session, for this fireside chat, may I please call upon Ms. Shefali Shah, who is an acclaimed Indian actor and a powerful voice for nuanced, socially relevant storytelling, whose work has consistently sparked conversations around women's agency, resilience, and representation. May I please call upon Ms. Shefali Shah? Give her a huge round of applause. And I would like to ask Sanket Upadhyay, who's a senior journalist. Give a huge round of applause.
All right, thank you so much. Shefali Shah, what an honor to talk to you. Have seen you play such powerful roles, right from Satya to Delhi Crime. It's an absolute privilege to be speaking to you today. Thank you. Absolutely my pleasure, and I'm just so happy to be here. Thank you. First of all, a word for Uttar Pradesh and Lucknow. What memory do you have of this place? What does it do to you? What do you feel? Does the main become hum the moment you land in Lucknow? No, but the first thing that strikes me as soon as I land in Lucknow is "Aap Lucknow mein hai, muskuraiye." And I think that kind of explains what Lucknow is and what not just the warmth, the hospitality, but I think also the philosophy. And that itself is so welcoming. Misha, on many occasions in your interviews, you have been quoted as saying, girls are safe when boys are raised right. How do we move women from safety to dignity? You see, right now, a very common concern in everybody's house is safe rehna, right? That is the advice that you give to women. As someone who is a role model, who plays these very strong, powerful characters in cinema as well as on OTT series, how do we move from protection to dignity? Well, let's first understand that safety is the base. Dignity and equal participation in creating that safety is the structure we build on top of it. Also, when we say women need to be protected, we are kind of implying that women are fragile and need to be protected by men, which is great, but it's not necessarily the only fact. We know what the problems are, so we need to be in a position to find a solution. We need to be in a position to have the authority to create a safer environment, not just wait for someone else to do it for us. And that enabling, of putting women in a position of power, probably making decisions, and kind of working a strategy towards what women actually want and need to feel safe. And also action taking. It's not just sitting and strategizing, it's also taking action against what is wrong and for or towards what should be the right way to go. And when little girls see these women lead, that's when they realize they want to participate, not take permission. And safety is preventing harm, but dignity, I think, is enabling agency. Very well said. Now, we all know that Women's Day is around the corner. And it almost becomes a sort of an exercise in celebrating women for one and a total of one day, and then going back to the remaining 364 days, business as usual. Now, what has your experience been? This putting women on a pedestal on that one and only one day only check. Do you think this is the mindset that needs to change? Why one day, bhai? Well, it's ridiculous. It's really ridiculous. Like, in fact, we are immediately nearing Valentine's Day. That also I find ridiculous. Why would you pick one day in an entire year to celebrate love or a woman? I mean, it's just supposed to be. I read something very nice, and which is a known fact, we just don't implement it, is that when a child sees the father treat a mother, that's how they're going to grow up and treat the women in their life. And that comes from basic respect. It's not putting a woman on a pedestal, giving her a medal, or treating her with flowers every day. It's just about basic respect and giving equal seat on the table. She's no lesser. ये बड़ी अच्छी बात. ये आपने जो बात बोली, अभी मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बात करूँगा, क्योंकि अरे मैंने तो सारे आंसर्स सब इंग्लिश में लर्न कर आई हूँ, फिर अब क्या करेंगे? थोड़ा सा तर्जुमा कर दीजिए अपने मन में, अनुवाद हो जाए. देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला that women need a seat at that high table. वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पहुँचेंगी कैसे? आप ये देखिए कि चाहे धीरे धीरे सरकार में ये चीज़ ज़रूर बदल रही है,
लेकिन अगर हम कहीं भी आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, बोर्ड रूम्स देख लीजिए, ऑफिसेज देख लीजिए, इट इज़ लार्जली मेल डोमिनेटेड. ऐसा नहीं है कि वहाँ जो हर पुरुष पहुँचे हुए हैं वो नेसेसरली किसी महिला का दमन करके ही वहाँ पहुँचे हैं. इट इज़ जस्ट द कंस्ट्रक्ट. ऐसे में वो कौन सी ग्लास सीलिंग या वो कौन सा दरवाज़ा तोड़ना है और किस तरीके से तोड़ना है जिससे यू गेट दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी. क्योंकि बात तो बहुत हो रही है, वो हो नहीं रहा. I think the base first to begin with is education. Education about not just the technical stuff, education about, like I said, that women do hold a place on the same table. It's not an exception. So let's stop treating it as an exception. We need to normalize it. और ये छोटी छोटी बातों में आता है, घर से आता है. That's why मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि अगर हमारे बच्चों को हमने सही तरीके से रेज किया है तो औरतों को सही तरीके से ट्रीट करना उन्हें आना चाहिए. यू नो, एक्सपेक्ट करना कि बाहर से सोसाइटी कुछ चेंज करेगा, गवर्नमेंट कुछ चेंज करेगा, येस आई अप्रिशिएट इट एंड दैट शुड बी डन, बट आई कैन डू इट एट माई लेवल इन माई हाउस एज वेल. ऑल्सो you know, I feel there is great strength in unity. Or contrary to belief, women are women's biggest strength. I don't think I have a stronger backup than my female friends. And I'm genuinely saying that. उनको सिर्फ एक पोजीशन में डालने से बेटर है कि let them also be the ones who think, strategize, plan, implement and do it together. उनको ट्यूटर करने के लिए, उनको मेंटोर करने के लिए वो औरतें हों who have gone through a similar situation and have risen it, not just the ones who've studied it, because the ones who've studied it are probably coming from a very privileged background. ये आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं, because you're hinting towards the efforts of self-help groups. Absolutely. जैसे चाहे लिज्जत पापड़ हो या फिर You won't believe it. That is the first thought that came to my mind. To think of it कि लिज्जत पापड़ 7 औरतें थी गुजराती, उन्होंने पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया अपने टेरेस से 80 रुपए का लोन लेकर. And they had a very interesting philosophy, Sarvodaya, which means every woman is a part of the ownership, which is amazing. The moment you give that ownership, you kind of want to take that responsibility. आपको पता है यूपी में भी एक तरीके का महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बुंदेलखंड में था, बांदा में. उनका नाम था गुलाबी गैंग. महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए, प्रशासन से आवाज़ उठाने के लिए, उस पर मेरे ख्याल एक फिल्म भी बनी. तो आपको लगता है कि ये वो चीज़ है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं? To get together and fight as a unit and community. Yes, and also we are not trying to marginalize men. They are our allies. We are stronger when we work together. एक individually आप अपना अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, and it's not a war of two sexes. It's really not. You know, there is enough place for the men and for the women. I know a lot of women activists who fight for men who are victims of, dowry laws being misused. So I do see this bonhomie that you are talking about. ये देखने को मिलता है. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ of women-led tourism and enterprises at a grassroots level. गांव देहात तक, अब हम जानते हैं यहाँ पर समक्ष पंचायत सीरियल की टीम है और महिला उत्थान का एक जो उदाहरण हमने इस सीरियल में देखा, इस OTT वेब सीरीज़ में देखा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिस इज़ ड्रॉन फ्रॉम रियलिटी. प्रधान पति ज़रूर होते हैं लेकिन वो एक कानून के मदद से आपने एक नीड क्रिएट की कि एक महिला चीफ हो गांव की. लेकिन ये जो फोर्सफुल एंट्री ऑफ विमेन इनटू अ सीट ऑफ पावर, इट कभी ना कभी 1, 2, अब तो सुनीता जी हैं, अगली प्रधान ये होने वाली हैं वेब सीरीज में. तो अब इनको उस सीट पर बैठ करके भाई कब तक वो प्रधानपति की सुनेंगी? कभी अंदर से भी मन करेगा ना. यू वुड हैव हैड टेस्टेड पावर. सो डू यू फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
ज़बरदस्ती ही सही, ज़ोर से ही सही, लेकिन एक बार दरवाज़ा तोड़ करके उस सीट पर महिलाओं का बैठना ज़रूरी है. I absolutely agree with it, and I think yes, but आपने दो सवाल पूछे हैं. One is about tourism. You know, a lot of women, बहुत सारी औरतें, they actually deal with hospitality, food, craft on a very basic level. घर से शुरू करते हैं, but they do not have a completely professional setup जिससे उनकी safety, security या उन्हें एक लोन मिल सके. और अगर लोन मिल भी जाए तो you don't have credit history, you don't have the right paperwork, you don't probably have you don't have something to guarantee it with कि हमारे पास ये property है, इसके खिलाफ हमें लोन दे दो. And if somebody does manage to go through that paperwork, I mean it's kind of, it takes your brain away and you're like, नहीं करना है भैया, ये करना ही नहीं है. So all of that needs to change, and it will come. It's not just about sitting on a high seat. I in fact feel, I don't think we are asking to sit on the high seat. I genuinely But don't you should. think so. No, why? You and me both can sit together on the same table. Of course we can. I know, see, the moment you say, इनको higher seat दो, आप ये imply कर रहे हैं कि वो lower level पर है. वो करने की क्या ज़रूरत है? Just treat it, we need to normalize it. Correct. Not make it like, oh wow, exception. It doesn't need to be made into an exception. It has to be treated like, okay, this is how it's supposed to be. Speaking of normalization, there was a time when in the Hindi film industry, it was normalized for a scene to exist where the word rape is casually used. It was normalized for women to be slapped by, the hero as a form of love or appreciation. अभी कठिनाई होगी लोगों को ये करने में. अभी ऐसी स्क्रिप्ट जो लिखेगा वो लताड़ा जाएगा. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, what change can the Hindi film industry bring about in empowering women, or has that journey already begun, or there's miles to go? Of course there is a journey that has begun, but it will always have miles to go. Any kind of growth and progress will have miles to go, and if there aren't any more miles to go, we are going to reach and believe that we've reached saturation, we've achieved, and we've kind of sorted everything out. That is not where we should be at any point of time in a society that is growing. Also, Hindi films या कोई भी language की films हमारे देश में, they are the biggest and the strongest platform of storytelling. Luckily, what has happened is now the woman is not just a subject of a story, they are the storytellers. They are directors, writers, producers, and not just women. I'm talking about an entire community which was diversified. Even if you're talking about LGBTQ, even if you're talking about somebody who is less privileged or belongs to a different class, if it's time they're not just in front of the camera, it's time they are behind the camera too. Isn't it difficult to talk about these issues? आप जानती हैं हमारा समाज बहुत टची है. जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक आम तौर पर न्यूज़ रूम में ये बोला जाता है कि भाई इस तरीके के, और ख़ास तौर से हिंदी न्यूज़ रूम्स में ये बोला जाता है कि भाई LGBTQ टाइप की चीज़ें मत करो, ये जनता देखेगी नहीं. लोग थोड़ा सा they will be a little असहज हो जाएंगे, they'll be uncomfortable. At the end of the day, cinema is also mass media. So if there will be no mass acceptance or consumption of causes like this, then would that discourage people from talking about these subjects, or have the tables turned? First and foremost, we need to stop treating this as an issue. We will make a issue-based film about this community. वो thinking ही wrong है. We will make a film. That's it. It's a part of, it has to be normalized as much as you and me can be a part of a film or a project, the same way anyone and everyone can be. Also, like I said, it's time and I think there are a lot of creators and makers who are the ones who are telling these stories, rather than just being an audience or being a subject of a story. It's not just a story of struggle, it's a story of normalcy that needs to be told.
इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हाईलाइट करोगे तो फिर इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा ना. It's as normal as anyone being in this room. Let's talk a little about what is upcoming. What can we expect? What next powerful performance can we expect from Miss Shefali Shah? Oh, powerful performance, I don't know. That is not where or how I intended to play any part. Yes, they are powerful women, but they're also vulnerable, and I think vulnerability is a great strength. That is where power comes from. If you feel strongly, then you want... Vulnerability is a strength. Absolutely. Can you please elaborate? If I don't feel it strongly, if I do not go through that emotion, why am I going to find the need to correct it? I will feel that pain, and it's fine. You know, often हमको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा करती हो यार. You're too much. Yeah, I want to be too much. I am too expressive. I am hyper. I am emotional. I am sensitive. These are my strengths, and I'm going to own them. I don't want to change them. I'm going to own them. For many decades, for people who don't know here, perhaps everybody knows, Miss Shefali Shah is known for her, is famous/infamous for exactly this death stare that you give. Okay, Close up sorry, on sorry. camera. I think I got carried away, but I will own it. Why? Is this like your trademark? No, this is it to scare people off? No. This is just the way I am. This is the way I express or And you know, talk. directors love it, because from Delhi Crime to name a movie, and I think it must be pretty standard for directors ki ye to let's go extreme close up. I have to share this here. So when we did Delhi Crime 3 right now, and my director told me a very interesting thing. He said, you know, me and the editors, whenever we were in doubt, we'd say cut to her. And I was like, and she doesn't need to say anything, just cut to her, we'll figure it out. And that is a compliment, but I just feel it's really not, I'm not intending to do it. You know, my impression when I look at Scared? No, not Intimidated? scared. I'll tell you. It's a mixture of, for everything. Beti baat nahi sun rahi, Delhi Crime mein to ek stare hai. That is the stare of your vulnerability. Then, if you are trying to exercise your might and right as a cop, then that stare is a stare of confidence. So that stare means, to me, as a viewer, a number of things. And I genuinely Was that the believe- intention? No, you know, we have the privilege of a camera. It catches the smallest nuance. If you can say something with 4 words, don't use 8. If you can say something with 2 words, don't use 4. And if you can just shut up, please just keep quiet. You know, there is a lot of power in silence. Also, you know the difference between a book and a film. A film is a vision of a director. A book leaves it for your interpretation and imagination. That silent stare or look is left to your imagination. You become a part of that moment. Wow, this is something I didn't really intentionally go out to do, but I just think it's really there. So what project are we going to stare at next? So I did 2 projects last year. I did a film called Hisab with Vipul, and it's with Jaideep Ahlawat. And I did another film which is tentatively titled Night Tales, which is with a new director. And yes, they are strong women, but they also come from vulnerability, and one of them is really cuckoo, which I loved playing. She's totally off the rockers, and I enjoyed it so much. I think identified with her. Yeah. I was like, Hard to "Arey, believe. chhod do, jo karna hai karo." Okay, last question. क्योंकि आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश विविधताओं का भी प्रदेश है. और यहाँ पर मैं तो उनको बोलियाँ नहीं बोलता, मैं तो भाषा मानता हूँ. ब्रज भी एक भाषा है, भोजपुरी भी एक भाषा है, अवधी भी एक भाषा है. तो इन विविधताओं को आगे ले जाने के लिए कभी ऐसा मौका आपको मिला है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट करें? अभी तक नहीं मिला, लेकिन मैं करना चाहूँगी. It's the next big thing, I can tell you this. आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए, अगर आप मैथिली में बोलेंगे तो आपको लाखों व्यूज मिलते हैं. I like the, you know, भोजपुरी में भी मिलते हैं, अवधी में भी मिलते हैं.
एक शो था by the same director who directed DC1, Delhi Crime 1, called The Poachers. उसमें हर लैंग्वेज थी. जिस जगह पर जिस प्रांत से वो इंसान बिलोंग करता था वो उस लैंग्वेज में बात करता था. It was exactly how our country is. And a normal line, a normal understanding would become Hindi very proudly so. I'm not saying English is not a part of it, but Hindi became a language of communication between everyone. And I think that is fantastic. So instead of, saying, ye Hindi film hai, Gujarati film hai, Marathi film hai, in Bombay, I'm thank God I know all these 3 languages. When I'm communicating in my house, all my helpers, staff, my son will speak in Hindi, my mom, I'll talk to her in Gujarati, my Aji, I will speak to her in Marathi, and that's how normal houses are, and which is great. So I think it's not just about, so it's and there is so much beauty in all of this variety. It's unique. It's something nice and new to the ears. It's not just the same. People are experimenting with it. I haven't had the opportunity, but I really do hope I get to do it. Raghuveer ji and Sasur. Thank you so much, Shefali ji. What My an honor pleasure. to talk to you. Absolutely my pleasure. That was, I think, the last answer was really, we saw so much diversification. We saw so much Marathi, Gujarati, all that. Give a huge round of applause for Ms. Shefali Shah. And it is time for the felicitation, please. That was really inspiring, isn't it? आपकी तालियों से पता लगना चाहिए. Thank you so much. And now we have talked about women's safety and from safety to leadership. Now, moving forward, our next session, our next fireside chat is based on sky is the limit. Yes, we have to talk about the youth sector too. So the youth, UP's infrastructure economy. Now, with one of the youngest populations in the country, Uttar Pradesh's future rests on its youth. And for this session, may I please call upon Mr. Shravan Kumar Vishwakarma, Chairman of Shankh Airlines, who brings a strong entrepreneurial perspective on building new age business and employment opportunities. Sir, can we please have you on stage? Mr. Shravan Kumar Vishwakarma. जोरदार तालियों से स्वागत करें. And for this fireside chat, I would like to call Mr. Prasad Sanyal, sir, who's a group business head, TY Digital, What's Short and India Times. Give a huge round of applause. Thank you so much. Good afternoon. I'll drive straight into it. We are running slightly behind schedule, I'm told, so let me get to it. आपकी जर्नी से शुरू करते हैं. आपने कानपुर से अपनी शुरुआत की. तो कानपुर से ये जो आपका लंबा सफ़र रहा है पूरा, मतलब आपने अपना बिजनेस शुरू किया कानपुर में, और ये जो एविएशन तक का सफ़र है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए. कानपुर से नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार से सफ़र शुरू हुआ और शुरू करते करते यहाँ एविएशन तक आए. मल्टीपल बहुत सारे बिजनेस हैं हमारे पास, माइनिंग्स रहे हैं, अन्य टाइप के बिजनेस रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रहा, लॉजिस्टिक है, कई तरह के बिजनेस रहे, एंड करते करते फाइनली हम जो है एविएशन में आए हैं. तो आपको आपके बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, तो आपको ये एविएशन में आपने जो इन्वेस्ट किया, एविएशन की जो कंपनी शुरू की, ये इसके पीछे क्या सोच रही है?
ऐसी कोई खास सोच नहीं रही है, क्योंकि जब आपके नॉर्मल से सही बात, जब आपके बिजनेस एक ग्रो करने लगते हैं, लाइन अप पे आप बढ़ने लगते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने लगते हैं, तो आप मल्टीपल फील्ड में जाने के लिए अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, समझ लीजिए। तो हम भी उसी तरीके से, मुझे लगा एविएशन आने वाले समय की ग्रो इंडस्ट्रीज़ है, तो हमने अपने आप को मूव कर लिया उसमें, एविएशन में। मैं आपकी एक इंटरव्यू में देख रहा था, आपने कहा कि भाई एविएशन भी बस और बाकी सारे मीडियम्स की तरह, ट्रांसपोर्ट मीडियम्स की तरह उसको सोचना चाहिए, उसको एक लग्जरी मोड की तरह नहीं सोचना चाहिए। तो आपको ये नहीं लगा कि ये स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन नहीं बड़ा रिस्की हो जाएगा? नहीं, रिस्की क्या हो जाएगा? आप ये बताइए, आप एविएशन को लग्जरी की तरीके से क्यों सोचते हैं? अगर आप सोचिए तो एक जगह से दूसरी जगह आपका यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का साधन ही तो है, तो आप उसको लग्जरी में क्यों लेते हैं? आप उसको इस तरीके से लीजिए ना कि हम एक एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और यहाँ से एक्स जगह से वाई जगह जा रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। और ये जो आप अपना ये फोरे देखते हैं एविएशन में, इस पे आपने उत्तर प्रदेश से अपनी कंपनी शुरू की, तो इसमें इस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना योगदान आप मानते हैं? नहीं, स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है, काफ़ी सपोर्ट मिला मैं इस स्टेट से, जितना सपोर्ट चाहिए था उन्होंने सपोर्ट हमको दिया। तो ये जो एयरपोर्ट है, अभी लखनऊ का एयरपोर्ट एक्सपैंड हुआ है, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, या जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में बना है, एक्सप्रेसवे बने हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? टियर 2, टियर 3 शहरों को जोड़ने की अपॉर्चुनिटी है, रीजनल डिमांड उससे कैसे बढ़ेगा, इस पे आपका क्या? देखिए, जैसे जैसे एयरलाइंस बढ़ेंगी वैसे वैसे ही डिमांड बढ़ेंगी, बिना एयरलाइंस के तो कुछ होना नहीं है, तो एयरलाइंस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ती। तो अभी जब आप ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट 2-3 साल का अभी अभी ऑपरेशन, हाँ, मतलब शुरू करेंगे अप्रैल के आसपास हमारे ऑपरेशन शुरू होंगे, जी। अप्रैल के आसपास हम शुरू करेंगे। हम लखनऊ से दिल्ली, अभी तो हम मेट्रो कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, आपका हैदराबाद हुआ, इन सब का कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने एयरक्राफ्ट नहीं है, अभी हम 5 एयरक्राफ्ट से शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी मेट्रो में सफ़र करेंगे, धीरे धीरे हम टायर 3 टीम सब में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो आपके नेक्स्ट 2-3 साल का विजन क्या है? किस कोई विजन नहीं है, 5 साल में अपनी कंपनी को टॉप पे देखना चाहते हैं तो बंद कर देंगे, बस 2 चीज़ें। क्लियर थॉट है उसमें हमारा, सोचना क्या एकदम क्लियर थॉट है, तो टॉप पे देखेंगे तो बंद कर देंगे। तीसरा उसमें हम देखना क्या, सोचना कुछ है ही नहीं, या तो 5 साल में कंपनी टॉप पे या तो बंद कर देंगे। तो टॉप पे ले जाने का कुछ तो आपने सोचा होगा कि भाई एयर इंडिया है, एस्टैब्लिश एयरलाइंस है, इंडिगो है। अब जो मैंने सोचा है वो हम आपको चंद सेकंड में या चंद मिनट में बयान नहीं कर सकते ना, वो जो सोचा है उसको उतारेंगे तो उसमें सोचने और उतरने में दोनों में डिफरेंस होता है। हम जो सोचते हैं चीज़ें वैसी हो ये ज़रूरी नहीं है, हम जो सोचते हैं चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, तो वो उस समय देखा जाएगा माहौल कैसा, चीज़ें कैसी हैं, तब देखा जाएगा। रीजनल एयरलाइंस पे इंडिया में खास करके बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, कॉस्ट प्रेशर है, फ्लीट डिसिप्लिन का प्रेशर है, DGCA के नॉर्म्स और गाइडलाइंस मीट करने का प्रेशर है। उन सब चीज़ों को उस बारे में आपकी क्या सोच है? उसको हैंडल करने के लिए टीम है, लोग हैं, बैठे हैं, उसको जो गाइडलाइंस होंगे उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे, आगे भी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। और ऐसा कोई इस प्रोजेक्ट को, जब आपने इस प्रोजेक्ट की मतलब आपकी जो परिकल्पना थी, इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां आपको लगा होगा कि प्रोजेक्ट स्टॉल हो रहा है या प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाएंगे? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं ना कभी पहले लगा, ना आज लगा, ना आगे लगेगा, कभी भी कुछ नहीं। कोई फंडिंग इश्यूज या रेगुलेटरी डिले? कुछ नहीं इश्यूज है, कोई इशू नहीं रहा, सब कुछ क्लियर है एकदम। तो आप जब कम्पीट करेंगे तो आपका ये जो डिफ्रेंसिएशन है, इस पे आपने क्या काम किया, या ये आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे मार्केट में? इज इट ओनली कॉस्ट और भी कुछ आपने डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स बनाए? नहीं, एक्चुअली वो जो मैंने बनाया है, जो सोचा है, वो जब ज़मीन पे उतारेंगे, जब पब्लिक देखेगी तब उस पर राय अपनी देगी। हम उसको अपने मुंह से कैसे कहें और क्या बताएं आपको? तो जब हम उतारेंगे, जब सर्विस देंगे, पब्लिक उसको अनुभव करेगी, पब्लिक बताएगी रिव्यू हमारा सही है, गलत है। कोई भी आदमी होता अपनी चीज़ को ख़राब नहीं कहता ना, तो हम भी अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं कहेंगे। और एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम देखते हैं बहुत पार्टनरशिप्स चलती हैं, तो पार्टनरशिप्स के बारे में आपकी कोई अभी सोच? अभी ऐसी कोई सोच नहीं, अभी तो जो हमारे जो अपने लोग हैं उन्हीं के साथ में हमारे हैं, और हम अब अकेले आगे बढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता क्या नहीं होता। तो भविष्य की बातें तो भविष्य में छोड़ देते हैं। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने कंपनी शुरू की है, आप जॉब्स और स्किलिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आप उस पर कुछ स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपको क्या सहायता मिली है, या कोई आपका सुझाव हो जिसमें आप देखना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट? देखिए, जॉब्स और उसके लिए जो हमारी कंपनी में नीड्स हैं, तो जैसे लोग रिज्यूम आते हैं, चीज़ें आती हैं, वैसे हम करते हैं। अब हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत पर्सनल सुझाव नहीं है।
विमेन पार्टिसिपेशन पे कुछ आप काम कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि और बढ़े? देखिए, ग्रोथ सबको पसंद है, सभी लोग चाहते हैं ग्रोथ हो। एक बात बताइए, आप ये जो आपकी जर्नी रही है, इस पे आपके लीडरशिप पे जो थॉट्स है, उसमें आपने कॉन्शियसली मतलब 2-4 पॉइंट ऐसे कुछ हमारे दर्शकों को बताइए जिसमें आपको लगे कि लीडरशिप पे ये 2-3 चीज़ें हो सकती है जिससे डिसीजन मेकिंग आसान हो या क्रिटिसिज्म आप हैंडल कर पा रहे हो अच्छे से। सिंपल सा, अगर मेरा एक ही मानना है कि जैसे लोगों ने कोविड के टाइम पर कोविड शील्ड लगाई थी, उसी समय लोग एक वैक्सीन लगा लें कि लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ जाए, सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो आप लोग क्या कहेंगे? ये मेरा मतलब मानना पर्सनल है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि लोग उसको माने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ अगर आपने ये वैक्सीन लगा रखी है अपने अंदर कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको बहुत चीज़ें ईजी और आराम से दिखाई देगी। जैसे एविएशन हम कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे पर ध्यान नॉर्मली नहीं देते हैं? क्यों ध्यान देना, चीज़ें हमारी हैं, ज़िंदगी हमारी है, जीना हमको है, मरना हमको, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, रिस्क हमारा, इज्जत हमारी, बेइज्जती हमारी, लोग क्या कहेंगे उससे क्या मतलब है? भाई सब कुछ हमारा है तो हमें लोगों से क्या मतलब है? हमारी चीज़ें, हमारा रिस्क हमारा, सब कुछ है, इज्जत भी हमारी, बेइज्जती भी हमारी, कंपनी हमारी बंद होगी हमारी, चलेगी हमारी, सब कुछ हमारी, तो लोगों से क्या मतलब है? आप रिएक्शन देख ही रहे हैं, लोग आपसे एग्री कर रहे हैं। एग्री करें ना करें वो उनकी मर्जी है, हमारे तो थॉट है, आपने पूछा मैंने बताया। तो एविएशन जैसा सेक्टर जहां फीडबैक बहुत मैटर करता है, दूसरी कंपनीज फीडबैक, तो आप लोग क्या कहेंगे आप पे असर नहीं है, लेकिन फीडबैक का तो कुछ असर होता होगा। फीडबैक हम नहीं सुनते हैं। हम अगर सुन रहे होते तो हम भी आम इंसान की तरीके यात्री बन के एयरक्राफ्ट में उड़ रहे होते, खुद उड़ा नहीं रहे होते। Well said. Actually, can I? कस्टमर अगर फीडबैक देगा हम उसको खुद समझेंगे और हम उस पर जितनी जल्दी हो सके इम्प्रूवमेंट करेंगे। देखिए ऐसा है ना, हम अपनी तरफ से हर चीज़ बेस्ट करने के लिए सोचते हैं, हम हो या आप हो, कोई भी हो, हर आदमी सोचता है मैं बेस्ट करूं, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं हमारी हमेशा फ्लाइट ऑन टाइम उड़ेगी, नहीं है, झूठ है, नहीं उड़ पाएगी, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, कहीं कुछ इश्यूज है, होगा, लेट होगा। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, उसको सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमसे गलतियां नहीं होंगी तो ये गलत है। गलतियां हमसे भी होंगी, बहुत सारी होंगी, हम सुधारेंगे, कंपनी लोग फीडबैक देंगे, हम उसको सुधारेंगे जरूर। इंडिया में एविएशन सेक्टर लो कॉस्ट एयरलाइन से डोमिनेटेड है, आप एक फुल सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सोचे और इसमें आपको कैसा लगता है कि आप कम्पीट कर पाएंगे? देखिए एक्चुअली में हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए एविएशन जो है एक नीड है, लोगों की रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे जनरेशन बदल रही, सोच बदल रही है। आप 2010 या 2000 के पहले जाइए तो उस समय एविएशन पे कुछ ही लोग बैठ पाते थे, बहुत लोग नहीं बैठ पाते, लेकिन समय बदल रहा, चीज़ें बदल रही हैं, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एविएशन ग्रो इंडस्ट्रीज है ही है, तो इसलिए हम स्वाभाविक सी बात एविएशन में चले गए। Actually, I'm going to throw it open to the audience because I think this is a very ideal session which I can throw it open to the audience. Can we get some mic? Yeah. शरवण जी ये बताइए, आपकी एयरलाइन में अनाउंसमेंट भी इसी तरीके से होगा जिस बिल्कुल तरीके होगा। से आप बोल रहे हैं? नहीं, आप देखिए वो हम तो वहाँ बोलेंगे नहीं, जो लोग जैसे बोलेंगे वैसे अनाउंसमेंट करेंगे, हम बोलेंगे तो अपने अंदाज में इसी तरीके से बोलेंगे। हमारा अगर अंदाज है तो हमारा ऐसे ही रहेगा। आप हमारे अंदाज के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन दूसरे कैसे बोलेंगे वो तो एयरलाइन तो आपकी होगी ना? हमारी होगी, हम ट्रेनिंग देंगे उसी हिसाब से, अब वो कैसे बोलते वो उनकी तो डिपेंड है। Any other audience questions? पीछे मैं देख रहा हूँ उस मेरे बाएं। सर आपने कहा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट होंगे, टेक्निकल ग्लिच होंगे और देखेंगे, लेकिन नहीं देखने देखने में लोगों की सिक्योरिटी और उनकी जो लाइफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका क्या होगा? क्यों ना ऐसी डीजीसीए के सारे नॉर्म्स मैंने बोला मैं फॉलो करके ही आगे काम करूंगा। और रही बात सिक्योरिटीज़ के लिए, तो एक एक जो पायदान बने हुए डीजीसीए के द्वारा या मौका के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, तो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही यात्री बैठता है।
आप उसको पढ़िए या पता कर लीजिए कहीं पर भी। तो सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज डीजीसीए 1 इंच का नहीं करता है, वैसे सेंटीमीटर का भी नहीं करता है। सिक्योरिटी को डीजीसीए मौका हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। थैंक यू। श्रवण जी, पहले तो आपका स्वागत है लखनऊ में, यूपी में आप जो है पहली एयरलाइन चालू कर रहे हैं, और मैं यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ और करीब 23 एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम कर चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस 37 ईयर्स का है। इस इंडस्ट्री में मैंने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं और मुझे पूरा आइडिया है इस इंडस्ट्री के बारे में। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप नया बिज़नेस चालू करते हैं तो उस बिज़नेस का एक यूएसपी पहले डिसाइड हो जाता है कि इस यूएसपी पे हम जो है काम करेंगे और इस तरह हम कंपटीशन को बीट करेंगे। आपका यूएसपी क्या है जिस पे आप जो है काम करना चाह रहे हैं? देखिए एक्चुअली में ऐसा है ना, हमने कोई एक पर्टिकुलर कोई यूएसपी बना के नहीं रखी कि हम इसी यूएसपी पे काम करेंगे, और ये कहीं ऐसा लिखा नहीं है या ऐसा कहीं पे किसी किताब में या कोई बुक्स में या किसी थॉट में नहीं लिखा कि अगर ये लिखा है तो यही ज़िंदगी भर होगा। हमारी एक अपनी विचारधारा, हम अपनी विचारधारा पे काम करेंगे। रही बात दूसरे लोगों की, उनकी अपनी विचारधारा, उन्होंने अपनी विचारधारा पे काम करा, हम अपनी विचारधारा पे काम करेंगे। तो वो यूएसपी आप इसको ऐसे कह लीजिए कि हम लोग जो अपने बैठे हुए जो टीम है, हम वही यूएसपी, हमारी टीम ही हमारी यूएसपी है। Any more audience questions? I can't see. सर एक लास्ट सवाल आपसे, आपके सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं, आपने पिछले 20-25 साल में जो इम्प्रूवमेंट देखे, आगे आप किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं? मतलब कुछ आपको लगता है जो चीज़ें और सुधर सकती हैं, जो और बेहतर हो सकती हैं? देखिए, हमें औरों पे ध्यान नहीं, हमें अपनी कंपनी पर अपने पे ध्यान है। हम और के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे और हमें करना भी नहीं। हम अपनी एयरलाइंस को अपने को देख रहे हैं बस केवल, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। दूसरे अपने सेक्टर में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनकी थॉट है, उनकी सोच है, वो उस पर कुछ भी करें। हम अपने को देख रहे हैं, हमको अपने से मतलब है बस। सरकार से कुछ? सरकार से बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहा, काफ़ी सपोर्ट है। सरकार ने हमको जो हमने उनसे कहा मुझे फ्यूल में सब्सिडी चाहिए, उन्होंने हमको दी, अप्रूवल दे दिया। On that note, I think it's a very good note to end this conversation on. Thank you so much for being a part of it. So please be on stage. And I'm sure कि हम सब we are looking forward to travel with Shankh Airlines. Now it is time to felicitate. Give a huge round of applause. Thank you very much. Thank you, Prasad sir. और अब भाई उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो पंचायत की बात कैसे नहीं होगी, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कैसे नहीं होगी, और अगर पंचायत की बात होगी तो पंचायत की पूरी स्टार्कर्स बैठी है मेरे सामने. सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड सेशन, joining us for this session are members of the Panchayat caste and cultural voices who have powerfully portrayed rural India, bringing authenticity, empathy and visibility to stories from the heartland. So may I please call upon, we have Mr. Raghubir Yadav, who is a veteran actor and cultural icon, whose work has long captured the spirit of rural India. Please give a huge round of applause for Mr. Raghubir Yadav. May I please call upon Mr. Faisal Malik, acclaimed for his nuanced portrayal of grassroots leadership. Give a huge round of applause. Mr. Chandan Roy, known for his compelling depiction of everyday rural realities. Give a huge round of applause for Mr. Chandan Roy. Ms. Sunita Rajwar, widely recognized for portraying strong, resilient women from the hinterland. जोरदार तालियों से स्वागत करें. And Ms. Sanvika, actor known for amplifying rural narratives for contemporary audiences. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें पंचायत स्टारकास्ट का. And may I please call Sanket Upadhyay, our senior journalist, for this session. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में थे कि कब ये सेशन शुरू हो, और फाइनली ये सेशन शुरू हो गया है। पंचायत की पूरी टीम को सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाईवाद कि फुलेरा गांव एक नेशनल गांव है जिसकी चर्चा देश के हर कोने में हो रही है। एक एक कैरेक्टर घरों में लोगों के दिल में घुसा हुआ है, और अब तो वहाँ पर जो चुनाव हुआ उसमें भी उलटफेर हो गए। तो जो नई प्रधान बनी हैं उनसे पहले शुरू करते हैं। हाँ, आपका जो कैरेक्टर है वो एंटरटेनिंग है, लवेबल है, लेकिन बनराकस की पत्नी जो भयंकर बवालियाँ हैं वो अब सत्ता कैसे संभालेंगी? देखिए, जब कुर्सी मिलती है तो सत्ता संभालनी भी आदमी सीख ही जाता है। वैसे तो हम किरदार प्ले करते हैं तो राइटर लोग संभाल लेते हैं कि हम कितना बवाल करेंगे या हम कितने जूते चप्पल खाएंगे, और हम एज एन एक्टर उनको बस समझ के वो ही पर्दे पर उतारते हैं। बाकी अगर वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखकर मैं बोलूँ तो यही कहूँगी कि जब कुर्सी में बैठता है इंसान और चारों तरफ जब लोग होते हैं तो वो अपने आप चलना आ ही जाता है, आ जाता है। आपका जो किरदार गुल्लक में है जी, और जो पंचायत में है, उन दोनों में बहुत लवेबल कैरेक्टर है, लेकिन है खुरपेचिया कैरेक्टर दोनों ही। तो ये कितना आपकी पर्सनैलिटी से लिया गया है, कितना आप इम्प्रोवाइज करती हैं या कितना आप स्क्रिप्ट पे टिकी रहती हैं? नहीं, मतलब वैसे तो स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी लिखी जाती है कि हम लोग मोस्टली टिके ही रहते हैं, लेकिन शायद कास्टिंग के समय वो लोग देख लेते हैं ये आदमी में कितनी अंदर चूहल है और ये एक्टर में कितना मतलब गुंडागर्दी है, कितने खुंखारी है, वो थोड़ा देख लेते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है, हम जो रियल लाइफ में होते हैं कहीं ना कहीं अंदर जो हमारी सारी प्रवृत्तियां हैं ना, वो प्रवृत्तियां जब हम कैरेक्टर को ही करते हैं तो वो काम तो आता है। रघुवीर जी, वो आपका माइक हो रहा। हाँ, देखिए, एक समय था जब सिनेमा पर, पर्दे पर, और आपने वो सारे दौर देखे हैं जब कहानी गांव की या परिवार की ही होती थी जी। फिर फिल्मों में और सीरियल्स में कहानी शहरों की हो गई, क्योंकि एक एस्पिरेशन उस तरीके का समाज का हो गया कि भाई शहर की चकाचौंध देखें। उस तरीके के सीरियल और फिल्में बनने लगी कि लंदन से इतना बड़ा कोट पहन करके हीथ्रो एयरपोर्ट से हीरो चले आ रहे हैं, है ना, उस तरीके की फिल्में हो गई। और अब का वो दौर जब कहानी वापस उसी गांव में ही है, गांव की ही कहानी अब हिट भी हो रही है, गांव के लोग भी देख रहे हैं, शहर के लोग भी देख रहे हैं। तो एज समवन जिसने ये पूरी चीज़ होते हुए देखी है, आपको क्या लगता है कि आज हिंदुस्तान के गांव की कहानी बताए बिना आप हिंदुस्तान की कहानी पर्दे पर नहीं उतार सकते? जी, एक्चुअली क्या है, ये बहुत बड़ा सत्य है कि आदमी लौट के वहीं आता है जहाँ उसने जन्म लिया, और वहीं मज़ा है। मैं बिल्कुल देहाती, बज्जर देहाती ये आ गया यहाँ तक। मैं बैलगाड़ी चलाता था, भैंस चराया करता था, और कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये ज़रूर था कि एक एक चप्पे चप्पे में जहाँ जैसे जैसे मैंने कदम बढ़ाते चला तो मुझे सच्चाई वहीं, जब मैं प्रेमचंद को पढ़ा करता था और फिर बाद में फिर मंटो और ये वो सब, इसमें चुगताई ये सब जब पढ़ना शुरू किया, तो वो जो ज़मीनी जो दौर था उस वक्त का, मेरी पैदाइश 50 की, 50 की जी, तो उस वक्त का जो दौर था और जो पूरे फ़ज़ा में जो इंसानियत तारी थी पूरी फ़ज़ा में, वो तो धीरे धीरे जब यहाँ कारखाने खुल गए, जब ये बहुत सारे चैनल और ये सब जो कल्चर के कारखाने खुल गए, तब मैं बड़ी तकलीफ़ में था। वो कारखाने ही थे। पहले बड़े सलीके से एक एक सब्जेक्ट पे इतना काम किया जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन, मुगेरीलाल जो भी है, हम और जो भी पहले फिल्म 2 बीघा ज़मीन उठा के देख लीजिए या जो भी है, तो उस पर इतना काम होता था। एक 2-2 साल सबसे पहले तो स्क्रिप्ट पर काम हुआ करता था,
और सारे ज़मीन से जुड़े हुए, 2 बीघा ज़मीन काबुली वाला, ये देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं मेरी नीयत वहीं थी। और हुजूर, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं NSD में आया, वो 70 का दशक था जब NSD में आया, उसके बाद 80 से मामला थोड़ा सा भटकने लगा। मैंने तय किया कि मैं नहीं जाऊंगा फिल्मों में, कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी नीयत वो थी, मेरा ईमान मेरे साथ था और मैंने सीखा इसलिए था। फिर मुझे लगा ये जो कॉमर्शियल ना तभी आया 80 के दशक में, उससे पहले कॉमर्शियल था ही नहीं, अच्छी फिल्में थी या खराब थी, उसके बाद आया। तो मैं तब से इंतज़ार कर रहा था कि भाई, और क्यों मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कि भैया लौट के आप वहीं आओगे, जो आपका बचपना था, जो गांव था, जो वो था। तो लौट के आया और आने वाला ही था, क्योंकि मैंने तय किया था कि जीते जी तो आने वाला ही है। और एक बात बता दूं मैं कि मुझे इतना मज़ा आया जब प्रधान मुझे मिला। तो मैं अब अपने उस वक्त के प्रधान का बता दूं कि क्या प्रधान थे वो। हम बच्चे थे, छोटे छोटे, 3, 4, 5 साल की उम्र रही होगी, हम खेल रहे थे और किसी की शादी थी। तो बस यही पंचायत, वो लोग अखाड़े के पास वहीं बैठे हुए और बस वो अपनी पंचायत चल रही, और हम लोगों को खेलते हुए देखा। तो जो पंच साहब थे, सरपंच साहब, वो कहने लगे, देखो ये देखो आजकल के बच्चे ये खेलने में लगे रहते, पढ़ते लिखते नहीं हैं, हमारे ज़माने में हम फर्स्ट आया करते थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा फर्स्ट आया तो मैं उठा, मैंने कहा कि सब लोग फर्स्ट आते तो सेकंड कौन आता था? मैंने कहा सब फर्स्ट आते तो सेकंड कौन आता था? भाई साहब, मेरे पिताजी ने इतना मारा मुझे, इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मैंने शादी में जाना छोड़ दिया, बोले बुजुर्गों के मुंह लगते हो। तो ये जो शिद्दत उस वक्त की थी कि बुजुर्ग जो कहें सब सही करें, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं कहीं ना कहीं मैं यही तुला हुआ था कि भैया भटक जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन वहाँ तो मैं दिल्ली में था, थिएटर करता रहा, और जब पंचायत और उससे पहले और भी फिल्में की, लेकिन ये कॉमर्शियल वाला मेरे जहन में कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा अच्छी फिल्म, बीच में जो मुंगेरी लाल कर दिया तो लोग कॉमेडियन बनाना चाहे तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बनना भैया। तो क्योंकि रगों में वही है, तो उसकी जो खूबी, उसकी जो खासियत, उसकी जो तासीर वही रगों में थी। तो मैं चाह रहा था कि इसी तरह का कोई हो, और वो आ गया, लौट के आना ही था। तो बस बड़ा खुशनसीब हूँ कि जीते जी मैंने पंचायत आ गया मेरे सामने। बहुत बहुत बढ़िया। अब रिंकिया के पापा से रिंकिया की तरफ तो देखिए, ये जो आपका कैरेक्टर है, इनफैक्ट जितने कैरेक्टर हैं पंचायत के, वो इतने टिपिकल हैं कि एक एक कैरेक्टर की एक एक बात लोगों को याद है। इस तरीके का इंटरनलाइजेशन जब आपने शुरू किया था, और वो भी गांव की कहानी, एक ऐसे वक्त में जब ये माना जाता है कि लोग अपने गांव में नहीं रहना चाहते, जाहिर सी बात है, लोग पीपल लुक फॉर ग्रीनर पास्चर्स, कि चलें शहर की ओर। ये पूरी कहानी है कि आओ लौट चलें। ऐसे में मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ थोड़ा, तो अपना अगर आप बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपके लिए क्या आसान था अपने आप को गांव के इस सीन में ढालना, या समय लगा? सर, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी मेरी आवाज़ के लिए, मेरे को थोड़ा ज़ुकाम है। मैं जबलपुर से हूँ और मेरी स्कूलिंग और सारी चीज़ें जबलपुर से हुई है। एंड जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, जब मुझे नरेशन दिया गया था, तो थोड़ा सा मुझे डर था। मुझे डर गांव के उसमें जाने में नहीं था, मुझे डर था कि मैं रघु सर और नीना मैम जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मैं काम करूँगी, तो वो एक डर था। फिर जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मैंने ये दुनिया थोड़ी बहुत देखी है, क्योंकि जो हमारे नानी दादी वो थोड़े गांव से थे, तो हम लोग कभी कभी जाते रहते थे, तो वो दुनिया का थोड़ा बहुत मैंने देखा हुआ है। तो मुझे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई उस दुनिया को समझने में। एंड प्लस जो इंस्पिरेशन मैंने इसमें लिया था, तो वो इंस्पिरेशन मैंने खुद अपनी बड़ी बहन से लिया था, क्योंकि वो जिस हिसाब से है, जो सहमी रहती है, वो आज के टाइम पे जो गांव की लड़की होगी, वो मैंने उसको इक्वेट किया था। तो उतना डिफ़िकल्ट तो मुझे लगा नहीं इसको करने में, क्योंकि मेरे पास सपोर्टर्स बहुत अच्छे थे। मेरे पास डायरेक्टर सर, राइटर सर थे, जिनने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी मुझे। तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि मतलब मैंने बहुत एफर्ट मारा है। लेकिन हाँ, मुझे मेरा ये पहला बड़ा काम था, तो वो जो एक नर्वसनेस होती है बड़े लोगों के साथ काम करने में, वो ज़रूर थी सर। लेकिन
अब आप जब उस मध्य प्रदेश के उस गांव में जाती हैं तो वो गांव वाले ये नहीं बोलते होंगे कि भाई यहीं रह लो, एक घर ले लो, जब बार बार आना ही है यहीं, हाँ यहीं रुक जाओ। मतलब हाँ, अगली बार मैं भी सोच रही हूँ सर, एक प्लॉट लेकर वहाँ पे डाल लेती हूँ। प्लॉट घर नहीं, प्लॉट, ये अच्छा था, बढ़िया। अभिषेक सर कैसे हैं? हाँ? माइकवा तो उठाइए। बहुत बढ़िया है। ये बताइए, ये एक सहम के सहायक की भूमिका जिसमें अभिषेक सर का भी ध्यान रखना है, जिसमें वो जो आपके बगल में बैठे हैं वो बल्ली काट के लाने को बोलें तो वो भी आप लिए चले आ रहे हैं, ताला तोड़ने के लिए, सब तमाम चीज़ें ये हमने करते देखी। ये जब किरदार आपने शुरू किया था कोविड के टाइम पर, मुझे याद है पहला सीजन जब आया था, तो एक समझने का प्रयास कर रहा था कम से कम मैं कि ये क्या भूमिका है। आपके लिए कितना आसान या मुश्किल था उस कैरेक्टर को पकड़ना? मुझे लगता है कि मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि मेरे लिए किसी कैरेक्टर को बनाना जो एक रास्ता है वो है स्क्रिप्ट। मैं स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ता हूँ, इवन कि उसके लफ्ज़ों पे भी ध्यान देता हूँ कि किस तरह के शब्द इसमें यूज़ कर रहा है, तो वो एक पूरा आर्क बन जाता है मेरे लिए। और बार बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिर वो कैरेक्टर अपने आप मुझे मिल जाता है कि हेलो मैं इधर हूँ भाई, उधर कहाँ ढूंढ रहा है। तो स्क्रिप्ट से ही मुझे अपने कैरेक्टर दिख गया था कि कैसा है विकास। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा प्रहलाद शाह, ऐसा कैसे हो सकता है? और रघुवीर सर ने तो इतने तमाम लोगों को एकदम तैयारी के साथ देखा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वेब सीरीज ऐसी आए जिसका एक एक कैरेक्टर की एक एक टेक्निक या बात मीम भी बन रही है, चर्चा भी हो रही है, इतना यूनिक हर कैरेक्टर, ये किस्मत में लिखा था? हाँ प्रहलाद शाह, किस्मत से ज़्यादा क्या है कि उस सीरीज का जो राइटिंग है ना, असली हीरो वो है, हम तो बस एक छोटा सा टूल है करते हुए। उसने जो आदमी सोचा हुआ है उसको वो लोग मिल गए, अब वो उसने उसको अपने अपने शस्त्र देने शुरू किए, जो नहीं कहते हैं एक और लो एक और लो। उसे स्क्रीन प्ले के माध्यम से हम लोगों ने उसको करना शुरू किया, और करने के बाद जब वो, क्योंकि चंदन जिन्होंने लिखा है, ये चंदन दूसरे वाले, वो इंसान कभी आपको मिलेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत दुनिया का सबसे ख़तरनाक सेंस ऑफ ह्यूमर वाला इंसान है, जो फ्लैट फेस कुछ भी बोल देता है। और जितनी डिटेलिंग वो आदमी को जानता था ना अपने कैरेक्टर्स को, हर एक इंसान को, आप सोचिए ना, कोई एक वर्ड एक सेंटेंस भी बोलता है, जैसे दो बच्चे हैं मीठी खीर वो जो था वो स्लोगन ही पर्पजली लिखा गया था कि वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस दुनिया में पहले की बात कर रहा हूँ, पहले सीजन की, जहाँ पे वो एक तरीके का मीम वर्ड तो तभी शुरू हुआ था, हम लोग को रात बिरात पता लगा मीम क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं। तो वैसा करना और इतनी डिटेलिंग में सोचना राइटिंग को लेके कि अगर आज सोचिए, आज हम लोग चौथे सीज़न तक पहुंच चुके हैं, वो सिर्फ वो राइटिंग जिसने हम सबको तैयार करके वहाँ तक दिया है चलाने, मतलब करने के लिए काम, अगर वो राइटिंग फ्लैट हो रही होती तो हम पहले दूसरे के बाद लोग भूल जाते। पर यह है कि वो सबसे अच्छी बात है कि हम सबको राइटर ने खड़े करके सेट किया है, वो जब आप करिए फिर आपको मज़ा आ जाता है। और ये हमेशा ही हुआ है, आप किसी भी बड़ी फिल्मों को देखें, कोई भी सीरीज़ को देखें, थिएटर के किसी बड़े बड़े प्ले को देखें, वो राइटिंग ही स्टेप 1 जो है ना, 10 में से 6 नंबर वो हो जाता है, बाकी 7, 8, 9, 10 करना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्क्रिप्ट पढ़े गए, जब पढ़े हम सब लोग थे, ये भी थे, तो मैंने सिर्फ एक जुमला कहा था कि भैया, एक जुमला मैंने एक बात कही थी। हाँ। मैंने ये कहा कि भैया इसमें एक्टिंग की गुंजाइश नहीं है। हाँ, मैं था उस दिन वहाँ पे, जिस दिन मारा था। डूबना पड़ेगा। हाँ। एक्टिंग की तो मारे जाओगे, फिर वो कॉमेडी हो जाएगी। तो ये है उसकी, ये जो सरलता सहजता जिस तरह से लिखा गया, अगर एक्टिंग करने लग जाते हैं हम लोग तो प्रॉब्लम हो जाती है। जी, तो इसमें एक्टिंग की गुंजाइश, इसीलिए वो इतना इंटरनलाइज्ड रहता है जी, और लोगों को इसीलिए अच्छा लगता है जी। अब मैं रघुवीर सर आप ही से पूछना चाहता हूँ एक एक करके सबसे। देखिए, एक यूएस की एक बहुत फेमस वेब सीरीज थी, 12 सीजन चली, द बिग बैंग थियरी,
और 12 सीजन बाद जिम पार्सन्स जिन्होंने शेल्डन कूपर का रोल प्ले किया, उन्होंने बोला मैं और नहीं कर सकता, अब कितने टाइम तक मैं एक ही चीज़ करूं। आपको लगता है ये भी एक समस्या आ जाती है अगर आप एक चीज़ चलती हुई को चलाते रहें? गांव की स्टोरी अगर आप उसको और क्रिएटिवली नहीं दिखाएंगे, बताएंगे, अलग अलग उसके पहलू नहीं रखेंगे, तो आप खुद बोर हो जाएंगे। बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या है कि अभी वो नौबत नहीं आई, क्योंकि अभी यहाँ अभी तो हार के अभी तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, तो अभी वो नौबत नहीं आई है, शायद इसके बाद आ जाए तो, लेकिन अभी क्या होगा वो मालूम नहीं। लेकिन क्या है, एक बात और बता दूं मैं कि हारने में बड़ा मजा है। अरे वाह! क्योंकि मैं अपनी से जुड़ी हुई बात बताऊं कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो गया था। अरे! और उसी की वजह है कि आज यहाँ पहुँचा हूँ मैं। हायर सेकेंडरी मुझे साइंस दिलवा दी गई थी, और साइंस उस वक्त 50 में साइंस भैया कोई H2O SO4 और O3 और A3 करते करते रट्टे मार के मेरे नाना जी का ही स्कूल था जो उन्होंने बनवाया था, स्कूल नहीं था, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा हैं, तो उनको पागल कुत्ते ने काट दिया, तो उनसे उनकी डेथ हो गई, तो उनकी स्मृति में वही स्कूल बनाया। उस स्कूल में मैं पढ़ा और वहीं साइंस दिलवा दी गई। और साइंस इसलिए दिलवाई कि भैया तुम जल्दी से कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और फैक्ट्री में काम, उसके बाद शादी के बाद बच्चे की बात वो तो गनीमत है आप फेल हो गए। तो वो फेल हुआ तो फेल होने की शर्मिंदगी से मैं भागा घर छोड़ के। वहाँ भी ये था कि जिसके साथ भागो प्रोफेशनल भगोड़ा था, वो महीने में 3 बार भागता था। तो उसकी सोहबत मिल गई, उसके साथ भागा और जाके सीधा ललितपुर पहुंचा, वहाँ नाटक कंपनी लगी हुई थी, चाह को राह। ये भी जो है कि चाह को राह होती, बस राह मिल गई, रास्ता मिल गया। फिर वहाँ 2 रुपये 50 6 साल बिल्कुल खानाबदोशों की तरह मैंने काम किया, यूपी MP बिहार राजस्थान सब जगह घूम के थिएटर किया। तो सारी चीज़ें ये सब फेल होने का नतीजा है। तो इसलिए अभी जो हारा हूँ ना, अब इस हार में फिर जो जीत का मजा आएगा वो उसमें इस हार के बाद आप कितने बनराकस हो जाएंगे और आप कितनी सहज हो जाएंगी। हाँ, मैदान छोड़ना पड़ेगा। बताइए सुनीता जी। देखिए मतलब पॉलिटिक्स है तो, और जब कोई भी इस तरह का स्पर्धा की बात होती अब है, आप विपक्ष नहीं है, ये जान लीजिए। हाँ, तो एक का जीतना एक का हारना ये तो कुदरती है। दोनों टीमें तो कभी जीत ही नहीं सकती हैं, चाहे कोई अच्छा हो बुरा हो। और अब 5 साल तो मिलेंगे ही। कहाँ जाएंगे? 5 साल तो मिलेंगे, तो 5 साल तक खेलेंगे जितना खेलना होगा, उसके बाद देखेंगे फिर क्या करते हैं। क्या अगले सीजन की शूटिंग हो गई है या अभी नहीं होने वाली है। अगर हाँ, अब तो होने ही वाली है। तो वो भी देख लेंगे क्या है, हारे वैसे क्या डरना। रघुवीर जी ने अभी बोला है मिड टर्म इलेक्शन। अब मैं ये बोल रही हूँ, फिर आप तो हारे हुए हैं ना, हारे वालों से क्या डरना। एक बार हरा दिया है, दोबारा आ जाइए मैदान पे, देख लेंगे। हिम्मत है भाई, हिम्मत है। मैं एक एक करके आप लोगों से सबसे, क्योंकि थीम गांव है और ये जो चर्चा है ये भी गांव का प्रतिनिधित्व एक नेशनल लेवल पर किस तरीके से किया जाए, और क्योंकि ये गांव उत्तर प्रदेश का बनाया गया दिखाया गया है, तो यूपी के गांव का महत्व, गांव की अपनी पॉलिटिक्स होती है, गांव में अपनी रणनीति होती है। गांव में ही डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा और मोदी पर चर्चा ऐसी होगी कहो ओवल ऑफिस में ना होती हो। तो गांव का अलग एक मिजाज है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, एक एक फैजल मलिक से शुरू करेंगे, आपको क्या लगता है कि भाषा, बोली और संस्कृति, आपको लगता है कि इसका वक्त अब मेन स्ट्रीम मुख्य धारा पर आ चुका है, और जिसको भी बड़ा बनना पड़ेगा उसको ये पावर समझनी पड़ेगी? हाँ, मतलब ये हमेशा ही रहा है ऐसे। मैंने कभी कभी ये नहीं कहा कि कभी गया है, पर अभी क्या है कि वो रहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं आता हूँ, प्रयागराज, इलाहाबाद, अब आप देखिए कितनी ज्ञानी जगह है वो। आप पत्थर मारेंगे, एक नया आदमी ज्ञान दे रहा होगा किसी को। आप उस शहर में टहलिए, कोई भी पान की दुकान, चाय की दुकान, ठेला, ऐसा जहाँ बचा नहीं, यहाँ एक आदमी दूसरे को कोई ना कोई ज्ञान बांट रहा है, और ये कह के बांट रहा है कि अब तुम्हें क्या पता है, हम बताते हैं।
ये उस शहर का, यहाँ का मिजाज रहा है। अब यहीं से निकले हुए लोग दुनिया में हर जगह गए हुए हैं, और अब समय ऐसा है जहाँ पे जैसे मैं कहूँगा ना कि लोगों को वापस याद आती है, जैसे लैंग्वेज की याद आ गई, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि करना पहले भी था। लोग सीरियसली उस दुनिया में नहीं इन्वॉल्व हो रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे ये इंटरनेट या जो माध्यम बढ़ता जा रहा है, वो डाइसेक्टिफाई करे जा रहा है इन चीज़ों को लेके। अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप एवरेज हैं तो नहीं देखा जा रहा है, अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो लोग देख रहे हैं, ढूंढ के देखेंगे, अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है तो लोग नहीं देखेंगे। तो क्या होगा कि ये रैशनैलिटी जो है वो इस जो है मीडियम ने आपको दे रखा है। और जैसे ही आप ख़राब हिंदी बोलेंगे या आधा करेंगे तो नीचे लिख के लोग बोल देते हैं कि भाई साहब सुना है आपने, वो ट्रोल, उन्हें हम कभी भी ट्रोल भी कहते हैं, पर कभी कभी ख़राब कविताएं कहने वालों को लोग पकड़ लेते हैं। ऐसा हो रहा है, वो मीडियम ने आपको दे दिया है। अब रही बात हम जो उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से जहाँ का कंटेंट हिट हो रहा है ना, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे बन रही हैं या कहानियाँ जो यहाँ पे हो रही हैं, आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि शूटिंग शुरू होने वाली है, ये सब इसको और मूवमेंट दे रहा है ज़्यादा करने के लिए। क्योंकि हम लोग का जो हिंदी है वो एक्सेप्टेबल हिंदी है एज अ हिंदी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में। मतलब हम लोग अगर कोई, मतलब जैसे हम कहें बुंदेलखंडी फिल्म जाती, जो हिंदी उत्तर प्रदेश वाली है वो ज़्यादातर एग्जिस्ट कर जाती है। जैसे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, पर बहुत हिट है, लोग माने दबंग फिल्म है, वो एक बहुत बड़ा चेंज ओवर था। जब फिल्म आई सिनेमा तो लोग ऐसे हो गए ना, अब उसी लैंग्वेज को पकड़ के लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ें बनाई। हम अपने शो की बात करते हैं, उसमें मिक्स दुनिया है, पर वो आपको सुनने में ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ वहाँ एक्स है, यहाँ वो नहीं लगेगा, वो एक्सेप्टेबली किसके साथ क्या गया है। और वो गांव उत्तर प्रदेश का किया ही गया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कहानी पे भी शुरू से, क्योंकि इस स्टेट का जो है पलायन बहुत ढेर सारा है सर, अगर आप कहा जाए तो। एक तो हम बहुत ढेर सारे हैं किसी कंट्री के आसपास हैं, और जो इस स्टेट की आप किसी भी शहर में आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी ड्रिवन बहुत ढेर सारी चीज़ें रही हैं, पढ़ाई ड्रिवन बहुत ढेर सारी चीज़ें रही हैं। तो वो एक्सेप्ट कहते हैं ना कि लैंग्वेज का एक्सेस होना और मिल जाना वो बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे तो और ज़्यादा हो गया है वो। चंदन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको लगता है वो गए ज़माने की आप बढ़िया नपी हुई, ओढ़ी हुई, अच्छी सी हिंदी बोलेंगे तभी आपकी बड़ी वैल्यू है? अब आपको लोगों तक पहुँचने के लिए, खैर वो था कभी भी नहीं, लेकिन अब और अच्छे से कनेक्ट करने के लिए विकास जिस तरीके का एक्सेंट पकड़ता है, बिल्कुल वो पकड़ना ही पड़ेगा। या तो सीखो, नहीं तो इंटरनलाइज करो, अदरवाइज जैसे फैजल बता रहे थे लोग पकड़ लेंगे, फिर आपकी एक्टिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। नहीं, भाषा की ज्ञान तो होनी चाहिए। और आप जब भी जैसे मैं जब भी मुझे ना मैला आंचल बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे शब्द मैं पढ़ता हूँ जो मेरी दादी बोला करती थी। अब लग रहा है कि मेरी दादी के साथ वो शब्द भी ख़त्म हो गए, है ना। तो और जब मैं पंचायत स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं बहुत ही इंटेंशनली लिया उसे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ख़त्म हो रहे हैं ये शब्द। जैसे कि बहुत सारे हैं, बट मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने बोला था अरे यार ये झाड़ा फिर देगा यहीं। हाँ। तो जो लोग बिहार से हैं शायद उनको पता हो, है ना, मैदान करना, टॉयलेट करना, है ना। तो ऐसा था वो, क्योंकि ये शब्द ना हमारे गांव में बहुत यूज़ होता था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं तो जो कहीं अब ऐसा लगता है कि जैसे मैं मीडिया से था पहले, तो हमें कहा जाता था कि जो पत्रकार होते हैं वो शब्दों के प्रहरी होते हैं, है ना। तो वो गुण गया नहीं है। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से, जैसे अभी मैं एक जब कर रहा था फीचर्स, तो सीजन 2 में मैंने बोला था हेरा बरगाही नहीं सुनाई थी। तो ये बरगाही एक बड़ा प्यारा सा शब्द है बिहार में, खासकर जब आप उधर बेगूसराय की तरफ जाएं, दलसिंहसराय, तो उधर ये बोली जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है अपने शब्दों को लेकर के आना, अपने कल्चर को लेकर के आना, अपने स्टाइल को लेकर के आना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि कई बार, चूँकि मैं मास कॉम का भी स्टूडेंट हूँ, IMC से हूँ सर मैं, तो मुझे पढ़ाया बताया ये गया था कि ब्रो तू क्या बोल रहा है ना, मत जा, तेरा इंटेंशन, तू किसी तरह कम्युनिकेट कर दे, बस यही कम्युनिकेशन है।
तो जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि एकदम वो नुक्ता उक्ता लगा करके अभी मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि तेरा ना वो सर से पाँव तक वो चीज़ें कह दे अगर बिना बोले भी तो काम हो जाएगा। जरूर नहीं कि एक बड़ा सा पैराग्राफ तू बोल ही, अगर सिर्फ इशारों में काम हो जाए तो हो जाएगा, है ना? मिनिमलिज्म, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हंसी आप सान्विका जी? क्या जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सान्विका जी कि आपको लगता है कि एक ब्लॉक भी बन जाता है लोगों के मन में अब, क्योंकि आप लोगों को पंचायत में देखने की इतनी आदत हो गई है ऑडियंस की कि अब वो आप कुछ भी करेंगे वो आपको उसी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उसी तरीके से देखेंगे, एक्सपेक्ट भी वही करेंगे। जैसे रघुवीर जी ने ये बोला कि मुझे एक तरीके के रोल्स आने लगे, मुझे मना करना पड़ा क्योंकि ये मेरी अपने से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इंतज़ार किया। ये पेशेंस बहुत आर्टिस्ट में नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ कई वजहें हैं। तो आपको नहीं लगता ये एक चुनौती भी आ सकती है? सर डेफिनेटली ये एक चैलेंज तो रहता है। तो सर मत बोलिए प्लीज, इतना बुजुर्ग नहीं हूँ। ये चैलेंज तो रहता है एंड स्पेशली जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड ये स्टीरियोटाइप करना ये थोड़ा सा इंडस्ट्री में है कि अगर आपने एक टाइप का रोल कर लिया है तो जितने भी बाकी के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स या जो डिसीजन मेकिंग पावर में रहते हैं वो आपको उसी से कंपेयर करते हैं। लेकिन फिर अभी और भी लोग आ रहे हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपको टोटली डिफरेंट अवतार में दिखाना चाहते हैं, तो वैसे लोग भी हैं। एज़ फार एज ऑडियंस इज़ कंसर्न, लोग वो ब्लॉकेज तो मैं नहीं बोलूँगी कि अगर आप एक किरदार में आ गए हैं और लोग आपको उसमें पसंद कर रहे हैं, मैं बोलूँगी कि वो प्यार है, लोगों ने उस किरदार को इतना प्यार दे दिया है। उससे निकलने के लिए बस यही हो सकता है कि आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा एंड फिर जब दूसरा एकदम तड़कता भड़कता एकदम हटके किरदार जब आपको मिलेगा और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, तब शायद वो हो सकता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करें कि अच्छा वो एक आर्टिस्ट है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सुनीता जी, 90 के दशक में हमेशा जब भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस से ये पूछा जाता था कि ये फिल्म के बारे में कुछ बताइए, तो वो ये कहते थे कि इसमें ज़रा कुछ हटके है, और फिर अगर आप फिल्म देखें तो बिल्कुल वैसी है जैसी, लेकिन अपनी स्पीच में वो हटके ही होता था। हाँ। आपको लगता है वो हटके की गुंजाइश वाकई अब है अब, और आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर सकते हैं अभी थैंक्स टू OTT? हाँ, थैंक्स टू OTT और मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है जो हमारी इंडस्ट्री में भी अभी आई है, वो और पंचायत के साथ उस समय रिस्क लिया जब इस तरह का कुछ भी प्लेटफॉर्म पे नहीं था। तो वो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है और वो आर्टिस्ट के लिए भी होता है। जैसे आपने खुद ही धीरे से बुदबुदाया था कि बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आप जो है एक जैसे रोल नहीं करना चाहते हैं या आपके पास चॉइस होती है कि आप करें या ना करें, है ना। तो बहुत बार बहुत सारे आर्टिस्ट के पास वो चॉइस होती भी नहीं है। लाइक इफ़ समवन इज़ रनिंग हिज फैमिली, तो उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो मतलब इस बात को लेके बैठ जाए नहीं एक से रोल नहीं करूँगा। बहुत बार हमारी ऐसी पर्सनैलिटी होती है, इवन ऑडियंस, नॉट ओनली द इंडस्ट्री बट ऑडियंस भी आपको उन्हीं रोल्स में देखना चाहती है। आप अगर कुछ हटके करते हो वो फिल्म ही नहीं चलती है या उसमें आपके काम को पसंद नहीं किया जाता है। तो ये मतलब ये तो जीवन का ना बहुत बड़ा गोरख धंधा टाइप है और मेरे ख्याल से सबका ये फिर पर्सनल एक एक्सपीरियंस हो जाता है। मेरे संग भी ऐसा बहुत हुआ है। मैं और अब बहुत मैच्योर होने के बाद मैंने अपने लिए अपने आप को ये समझाया है कि लेट मी टेक इट एज अ चैलेंज। अगर मुझे बार बार कॉमेडी का रोल मिलेगा तो मैं कैसे उसको एक से अलग करूं दूसरे को। इवन क्रांति देवी और बिट्टू की मम्मी जब है तो बहुत बारीक सी एक लाइन है, तो मैं बार बार डायरेक्टर सर को बोल रही थी कि सर देखिएगा कहीं ये कॉमेडी करूं अगर क्रांति देवी की में, क्योंकि इंसान तो वही है, मैं तो उसी तरीके से हंसूंगी या मेरा टोन वही रहेगा। अदरवाइज़ ये है कि मैं बिल्कुल ही अपनी आवाज़ ऐसे कर लूँ और क्रांति देवी में मैं ऐसे बोलूँ और बिट्टू की मम्मी ऐसे बोले तो शायद हो, पर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैरेक्टर जो होता है जब
बनाते हैं तो वो राइटर्स भी वो ना लिखते समय दिमाग में रखते हैं कि ये ना वो करेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने अब सीख लिया है, मैंने एज अ चैलेंज ले लिया है, मुझे बस काम करना है, मुझे जो करना है दे दो, मैं फिर आप अपने हिसाब से उसको कुछ चेंज ना कुछ कुछ कर ही ना लेंगे। कुछ चेंज कर लूँगी। और ये अच्छा होता है कि ऑडियंस अगर आपको पसंद करती है ना तो 19-20 गलतियाँ भी माफ़ कर देती है। अरे वाह, बहुत खूब। हाँ सच में माफ़ कर देती है। बहुत खूब। नहीं, लेकिन देखिए पंचायत कॉमेडी नहीं है। नहीं, पंचायत की पंचायत पहचान comedy कॉमेडी से नहीं, ड्रामा से है। उसकी ड्रामा से। उसमें सेकंड सीजन में जो सीन था जब प्रहलाद शाह का बेटा जी। और उसकी बॉडी आती है, माय गुडनेस, झकझोर करके रख दिया उस मोमेंट ने। मुझे नहीं लगता कि कंटेम्प्रेरी किसी भी वेब सीरीज में उस तरीके का प्रेजेंटेशन हमने देखा भी है। तो पंचायत की खूबसूरती यही है कि इसमें ना बहुत सारे इमोशंस हैं। करेक्ट। और इसमें इसीलिए शायद हम सब एक्टर्स के लिए भी बड़ा चैलेंज रहता है कि अपने आप को। हाँ, जैसे सर ने बोला कि इसमें एक्टिंग करोगे तो आप पिट जाओगे। करेक्ट। और इसमें इतने इमोशंस हैं, मतलब जैसे हमारा ही जो गैंग है, इन लोगों का तो बड़ा सभ्य गैंग है। व्हाट्सएप पे हमारा हाय तो लिख उजट, देते हैं। हाँ, हमारा तो उजट वाला गैंग है ना। हाँ। तो बड़ा वो राइटर के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है। Correct. आप जरा भी उसमें अपनी हरकत करोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। बिल्कुल सही। लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूं, सब लोग जानते ही हैं, कौन नहीं जानता रघुवीर सर के बारे में। जितने तैयार कलाकार हैं उतने ही महीन गायक भी हैं। और मैं आज मंच पर एक कुछ अपनी ज़बान में कुछ जो आप यहाँ दर्शकों को छोड़ जाएं, कोई एक ऐसी चीज़, क्योंकि इतनी मधुर आपकी आवाज़ है, चाहे वो बिग बबोल का एड में गाना हो, सब सुना है। इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश रहेगी जो आप कुछ गुनगुना दें। अब क्या है कि एक्टिंग में आया, फंसा इसलिए, बनना चाहता था कि कुछ म्यूज़िक सिंगर बनना चाहता था, और ये एक्टिंग तो गले पड़ गई मेरे तो ये बस निभाए जा रहा हूँ। लेकिन एक बात देखी मैंने कि चाहे वो ज़बान की बात हो, चाहे लिखने पढ़ने की बात हो, चाहे ज़िंदगी जीने की बात हो, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका साथ म्यूज़िक ही है। अब अगर आप म्यूज़िक है आपके अंदर तो आप किसी भी ज़बान को कहीं भी कोई फ़ौरन पकड़ में आती है, जज्बात भी पकड़ में आ जाते हैं। यही वजह है कि म्यूज़िक मुझसे नहीं छूटा। अब म्यूज़िक आया कैसे, तो मैं गा के ही बता दे दूँ कैसे आया। कि जहाँ हम रहते थे, मैं 5-6 साल का था, ये मैं कई बार बता चुका लेकिन बता दूँ। और उसी दौरान ये रसखान और कबीर, इन लोग ये भीख मांगने वाले गाया करते थे वहाँ से। और उन दिनों जो म्यूज़िक तारी था पूरी फ़ज़ा में, क्योंकि रेडियो वेडियो कुछ नहीं हुआ करता था, कोई कि रामलीला, रासलीला और एक रामायण पढ़ने वाले पंडित जी हुआ करते, इतना सुरीला गाते थे वो। तो मैं उन्हीं का कुछ बता देता हूँ। तो पहले मैं वो बता दूँ कि शुरुआत कैसे हुई। मैं रहा हूँगा 2.5-3 साल का। तो हमारे जहाँ गांव में बस आधार ताल जगह का नाम है जबलपुर में, वहाँ एक तालाब था, तालाब के पास एक टीला था, वो मेरे नाना की ज़मीन थी, वहीं मकान था। अब मकान था तो हम वहीं गर्मी में चले जाते थे। तो जब 2-2.5-3 साल का था मैं, तो एक पापड़ बेचने वाला दूर से निकलता था। पहले सुर मेरे कानों में पड़े, पहले वो पापड़ वाला दूर से सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था। तो मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। अब हम उसको बुलाते थे, ए पापड़ वाले, सुर वहीं देखी, ए पापड़ वाले। तो पापड़ वाला आ जाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। जब दूर होता था तो मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। अब वो नजदीक आ जाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, और पापड़ देता रहता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर चला जाता था पापड़ देख के, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, चला गया। उसके बाद दिन भर में घर में पापड़ बेचता रहता था। तो वही पापड़ बेच बेच के आज यहाँ तक पहुँच गया मैं। और वो पापड़ वाला उस्ताद मेरा, उसने सुर दिए मुझे। उसके बाद एक अंधे थे सूरदास जी, वो भीख मांगते थे।
तो घर के सामने से निकलते थे, मैं उनका पीछा पकड़ लेता था और पीछे पीछे जाता। वो एक भजन गाते थे रसखान का, और उनकी पत्नी थी, वो कंधे पे हाथ रख के और वो गाते चले जाते थे कि आजू गई उती भो रही हो रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं, तेली लगाई लगाई के अंजन भोह बनाए बनाए, ढिठो नहीं डारी हमेला निहारती आनन, भारती जो चुचकारत छो नहीं, अरे धूर भर अति शोभित श्याम जू तैसी बनी, सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिर अंगना, पग पे जनिया कटी पीरी कछोटी, बछबी को रस खान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी हाथ से। अब इसी का पहले ये बहुत ज़माने में ये जो रैप गाते ना, अब इसका ही कर दो, आजू गई हुती भो रही हो रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही। उस वक्त लिखा गया था, देखिए, बाको जियो जुग लाख करो नहीं, जसमती को सुख जात कहूँ नहीं, तेली लगाई लगाई के अंजन भोए, कुछ भी कर लीजिए। तो ये उस वक्त से चला आ रहा है, तो वो तवज्जो नहीं दी। और रामायण पढ़ने वाले जो उस वक्त गाते, पंडित जी थे, चौपाई कितनी तरीके से गाते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और फिर दुख का मामला होता था, जब जैसे शक्ति लगी और वो हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, पता लगता था कि हनुमान जी कितने दूर होंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये था बस। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Now that was wonderful, isn't it? Give a huge round of applause for the Panchayat Starcast and for Raghubir Ji's song as well. Now it's time for the felicitation, please. Zordar Talia. Give a huge round of applause. मुझे लगता है चेंज ग्रोथ की तरफ तब बढ़ता है जब हम पंचायत को, यानी कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन स्टेज डिस्कस करते हैं। इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। जोरदार तालियां। भाई सितारे जब आपके बीच में है तो तालियां तो बनती है। Thank you so much. Now we all know, thank you very much. Now we all know that Uttar Pradesh is known for its vastness, for its culture and diversity. Now it's time to actually understand the culture of Uttar Pradesh. And for this session actually, this is the last session, last panel discussion, UP's cultural renaissance. From timeless traditions to global recognition. And for this session, now I request everybody to please sit, because we are moving forward
to our last session, last panel discussion. I request everybody to just sit. Okay. Now we are moving towards our last session, last panel discussion. And for this session, may I please call upon Mr. Anmol Dwivedi, who is a content creator known for spotlighting Uttar Pradesh's cultural heritage and everyday traditions through compelling digital storytelling. Can we please have you on stage, Mr. Anmol Dwivedi? Give a huge round of applause. And I'm once again requesting all the guests who are here with us, please take your seats because we are moving forward to our last panel discussion. Now moving forward, our next guest, our next panelist, Mr. Vivek Maurya, who is a content creator whose work captures the flavors, people and lived culture of the state. Zordar Talia for Mr. Vivek Maurya. Mr. Ashutosh Mishra, who is a content creator focusing on history, heritage and the evolving cultural identity of Uttar Pradesh. Zordar Talia. Mr. Renita S. Kapoor, who is an actor, singer, and author whose creative work bridges classical roots with contemporary expressions. Ms. Renita S. Kapoor, ma'am, can we please have you on stage? And Mr. Shaurya Kumar, who is a content creator, amplifying regional narratives and bringing local culture to national and global audiences. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, and I'm again requesting all the guests to please sit. We are moving ahead to our last panel discussion. I'm requesting all the guests in the hall to please take your seats. And now I request Sanket Upadhyay ji, senior journalist, to please join us on stage, and the stage is all yours. Thank you very much. और जोरदार तालियां, I think you all were busy. So एक बार जोरदार तालियों से motivation के साथ. Thank you very much. मेरी गुजारिश रहेगी सब लोग प्लीज बैठ जाएं, कृपया सब लोग बैठ जाएं. प्लीज सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीटेड. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का. ये आज की दोपहर का आखिरी सेशन है जिसमें हम एक ऐसे समुदाय, वर्ग, समाज का वो हिस्सा, उसके बारे में बात करेंगे जो सही मायने में मुख्य धारा, अगर आप कहते हैं तो यही मुख्य धारा अब हो गई है. दिस इज द मेन स्ट्रीम. कंटेंट क्रिएटर्स, चाहे रील्स हो या फिर यूट्यूब हो. मैं खुद बतौर पत्रकार अब यूट्यूब पर हूँ, तो यही मुख्य धारा है. तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत. किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव और बदलाव की बात सोशल मीडिया के इस्तेमाल से की जा सकती है एक सकारात्मक संदेश देने के लिए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे. सबसे पहले मैं अनमोल द्विवेदी जी आपके साथ शुरू करना चाहता हूं. ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ आप लोग जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हैं, सब उत्तर प्रदेश को प्रमुखता से आप हाईलाइट करते हैं. अनमोल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये शुरू किया था तो क्या आपने इस उद्देश्य से शुरू किया था कि आप बदलाव के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बात करें, या ये बस हो गया? नहीं, ये शुरू तो ऐसे नहीं हुआ था. मतलब बतौर, जैसे मैं एक प्राइवेट जॉब में अभी भी हूँ, ठीक है, तो एक वो था कि नहीं, मेरे को एक जैसे एक ट्रैवल का वो रहता है कि आपको घूमना है और सारी चीज़ें देखनी है, अपने देश को जानना है, तो उसी तरह से ये शुरू होना था. बट वो कहते नहीं है, कॉर्पोरेट जॉब के चक्कर में आप उतना आपको टाइम नहीं मिलता और सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर ये सोचा गया कि नहीं, एक काम करते हैं कि
अपना ही शहर बहुत अच्छे से घूमते हैं। और फिर ये जर्नी शुरुआत हुई लखनऊ से, और उसके बाद फिर हमने और जगह को जानना शुरू किया। और आज के मतलब जो भी हमारे यूपी के काफ़ी इवेंट्स और वो सारी चीज़ें, तो उनको हम अपनी स्टोरीज़ और अपने स्टोरी टेलिंग से सामने लाते हैं लोगों के। विवेक मौर्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कुछ रील्स देखी जिसमें ट्रू टू यूपीज़ जो मिजाज एक रहता है बाहर के लोगों का, उसमें भौकाल कोशंट बहुत है। तो ये सोच करके बनाया या ये है पर्सनालिटी में है कि थोड़ा सा? मुझे पहले से ही ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस मिलता है हमको, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, तो इस वजह से स्टार्ट किया। माला पहनाई जाती है, गाड़ियों का काफिला चलता है, लगता है कि कोई आ रहा है, इसी वजह से भौकाल शब्द का प्रयोग। तो ये इंटेंशनल है या ये हो रहा है बस? नहीं, इंटेंशनल है और हो भी रहा है। हाँ। एक तरह से क्या देखते हैं आप अपनी इस यात्रा में, खास तौर से परिवर्तन अगर आप देखें तो किस तरीके का परिवर्तन आपको दिखता है जो आपको मजबूर करता है कि आप उसकी रील बनाएं? वहाँ पे जैसे हेरिटेज प्लेस हो गए और हिडन जेम्स हो गए, इन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना जिससे अधिक से अधिक लोग कनेक्ट हो सकें। आशुतोष जी, आपका अनुभव क्या रहा है? किस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं? किस चीज़ के बारे में बात करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? मैंने जनरली जो कोशिश की है वो लखनऊ में जितने भी हिडन जेम्स होते हैं, ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस होती हैं जिनको ज़रूरत है कि मतलब प्रमोशन मिले और वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म बढ़े, उनको मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक आपकी मॉन्यूमेंट है लखनऊ में, बीबियापुर कोठी करके एक पड़ती है, वो आर्मी के अंडर में आती है, थोड़ा सा एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती है, मैंने उसको भी कवर किया अपने उस थ्रू, तो एटलीस्ट लोग उसके बारे में जाने। लोग जानते नहीं हैं, और जो इस करंट स्टेटस में जो बिल्डिंग है वो थोड़ी सी डैमेज्ड है, थोड़ी सी वैसी है, तो वो चीज़ जो होती है ना कि अगर वो थोड़ा सा हाईलाइट में आएगी तो वो थोड़ा रिपेयर और रिस्टोरेशन वाला जो काम होगा वो उसका हो पाएगा। तो ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाए लोगों को, कुछ नया पर्सपेक्टिव दिखाया जाए जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा है, शायद इसके थ्रू जो देख पाएँ, मेरे थ्रू देख पाएँ। आशुतोष जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि देखिए, आप विरासत दिखा रहे हैं, हेरिटेज दिखा रहे हैं, संस्कृति दिखा रहे हैं, लेकिन जितना उसको दिखाना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा उसके बारे में ठीक से जानना भी ज़रूरी है। अब क्योंकि ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में आप भी जानते हैं कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है। इस वजह से आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब आप किसी चीज़ के रेस्टोरेशन या उसकी लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले आपने बहुत अच्छे से उसके बारे में रिसर्च कर ली है, जान ली है, ताकि आप सही मायने में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, ये कोशिश तो रहती है कि हमको अगर कोई भी प्लेस को अगर समझना है या लोगों को बताना है, अगर उसके बारे में हम ढंग से रिसर्च नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लोग जान नहीं पाएंगे वो चीज़ है क्या। तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और कोशिश रहती है कि फैक्ट जो होते हैं क्लियर उसी को ही पेश किया जाए, उसमें कुछ तोड़ा मरोड़ा ना जाए, ये चीज़ रहती है, ताकि ऑडियंस देख पाए, उनको ये बताया जाए कि आज इसकी ऐसी स्थिति है, शायद हम इसे आगे बदल ना सके एटलीस्ट कम से कम इंप्रूवमेंट तो ला ही सकें एटलीस्ट। रेनिता जी, आपकी जो सोशल मीडिया फीड है वो सिर्फ रील्स नहीं है, उसमें जैसे मैंने देखा शॉर्ट फिल्म भी है, तो अपने अनुभव के बारे में मैं चाहूँगा कि आप बताएं यहाँ दर्शकों को कि किस मकसद से क्या आप अचीव करना चाहती हैं, क्यों आपको ये लगता है कि ये लोगों को सुनना ज़रूरी है या ये जानना ज़रूरी है? Thank you for the question and thank you TOI for having me here for this panel discussion. I'm really honored. मुझे ये लगता है कि एक माध्यम है कुछ भी लोगों तक पहुंच जाने का, and that is one thing which I always loved. I've been doing theatre since I was 4 years old, and वो मेरी पहली जो परफॉर्मेंस थी वो अयोध्या में थी, मैंने 4 साल वहाँ पढ़ी थी बचपन में, and after college I left India. For 20 years I was in Singapore. And वहाँ पे मैंने हिंदी थिएटर स्टार्ट किया, अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली और बहुत सारे वहाँ पे प्लेस किए, बहुत सी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी और ख़ुद भी मैंने लोगों को ट्रेन किया. एंड बाय गॉड्स ग्रेस कुछ आई एम ब्लेस्ड, आई थिंक दैट आई कैन राइट एंड आई कैन सिंग. सो सारी फॉर्म्स ऑफ आर्ट को
मुझे ऐसे लगता है आई फील रिस्पॉन्सिबल कि अगर मुझे मिली है तो मैं लोगों तक वो पहुंचा सकूं, एंड आई ऑल्सो फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि हम जो दिखाते हैं अपने रील्स में या अपने कंटेंट में, उसमें ऐसे मैसेजेस हो जिससे कुछ बेहतर हो सके. आई मीन आई रियली फील दैट आई एम अ बिग promoter of self-love. I talk about self-love. I want to spread the message of love and spirituality, not religion specifically. And तो मेरे बहुत सारी simultaneously चीज़ें चलती हैं, सिर्फ एक्टर नहीं हूँ जैसे मैंने कहा. तो मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे थ्रू जितने भी लोगों तक अगर प्यार का मैसेज पहुँच सके और कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदल सकें कि वो खुश रहना सीख जाएं, अपना ध्यान रखना सीख जाएं. सो दैट इज़ माई पर्पस. एंड एक्टिंग का तो कीड़ा, आई वॉज बॉर्न विद इट. आई लव एक्टिंग एंड बाय गॉड्स ग्रेस. मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, बहुत धीरे से इन्होंने बोला, फिर बदल गई, एक्टिंग का कीड़ा बोल करके आगे बढ़ गई कि नहीं ये शब्द जरा उचित नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, कान में पड़ गया. 100% है और वो जिंदगी भर रहेगा. थैंक यू जी. आपके और मेरे बीच में एक चीज़ और कॉमन हो गई, आपका और मेरा गृह जनपद भी एक है, फैजाबाद अयोध्या. अरे वाह. हाँ. बहुत बढ़िया. शौर्य कुमार जी, देखिए कितना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए रील्स या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपने कल्चर को प्रमोट करना. ये अपने जहन में, अपने मन में ये चीज़ रखना कि हमको कल्चर प्रमोट करना है, ये कितना ज़रूरी होता है? एक्चुअली ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जैसे देखते हैं इस समय की चीज़ें, मतलब जैसे कि बोलना चाहें जो हमारा कल्चर है एक तरह से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लॉस था. ठीक है, काफ़ी आर्ट फॉर्म्स थे जो कि प्रेजेंट टाइम में इस समय उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है. तो उसके बिहाफ से वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है दिखाना, जो हमारी आगे जनरेशन आ रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि किसी को कुछ चीज़ें, जैसे हम यहाँ पे लखनऊ में हैं, हम अपनी लखनऊ की चीज़ें जैसे बताना चाहते हैं, तो हम प्रेजेंट टाइम में अदर सिटी में अगर दिखाना चाहते हैं या फिर कहीं ग्लोबल लेवल पर दिखाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हम सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी उसको प्रमोट कर सकते हैं. तो ये हमारा एक बहुत ज़रूरी भी चीज़ है. एक एक करके मैं आप लोगों से फिर से एक राउंड लूँगा. सबसे पहले अनमोल से शुरू करते हैं. अनमोल, जिम्मेदारी संस्कृति को, कल्चर को बचाने की, दिखाने की और उसको आगे बढ़ाने की, ये आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? ये एक फैक्टर रहता है, और ख़ास तौर से क्योंकि आप लोग सब यूपी से आपका वास्ता है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ये कितना ज़रूरी हो जाता है दिमाग में कि ये करना है, और आपने अगर ये मकसद रहा है तो क्या अब तक क्या हासिल किया है? सर कई चीज़ें हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब हम मान लीजिए कन्नौज गए तो एक मैंने वहाँ पर एक महल देखा था, आनंद भवन करके है, ठीक है, कि जिसको मतलब वो शायद एक तरह से कहने को पड़ा हुआ था बेकार, जिस पे कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है. अभी उन्होंने वो प्रॉपर्टी डेवलप की, ठीक है, और उसको मतलब वो बाकायदा वैसे ही जैसे राजाओं की आप जाते हैं हॉल में फ़ोटो लगी होती है बड़ी सी, और एक तो वो पूरा एक उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, ठीक है. तो वो जब अगली जनरेशन देखेगी तभी उससे जुड़ पाएगी. दूसरा एग्जांपल आप ले लें कि मान लीजिए हमारे यहाँ रेजिडेंसी है, ठीक है. अभी तक लोग जाते थे कि यहाँ ये दीवारें हैं, यहाँ पे ये गोलियाँ लगी थी या ऐसा कुछ था. अभी रेजिडेंसी में क्या हो गया है कि आपका उसमें पूरा उसका नाइट में शो होता है, ठीक है, विजुअल्स के ज़रिए, ठीक है, उसको दिखाया जाता है प्रॉपर. तो ये चीज़ें हैं जो इसको आगे लेकर के जा रही हैं नेक्स्ट जनरेशन तक. विवेक, आपका अगर आप उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहें कि ये अनुभव किस तरीके का रहा है, कैसे आपने वो कल्चर लोगों तक पहुंचाया है. और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. अब जैसे रेजिडेंस है, रेजिडेंसी है, आज से नहीं ज़माने से है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन आप वहाँ जा करके हो सकता है बहुत ही ऑब्वियस कोई चीज़ देख करके बताएं, जो बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी को उसके बारे में पता हो. तो हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री को रिपीट करना कितना ज़रूरी है, ये ना मान के आप बैठें कि ये तो पता ही होगा लोगों को. नहीं, बहुत सारे लोग जो नई जनरेशन के हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानते ही नहीं हैं, या जो लखनऊ के बाहर के हैं या यूपी के बाहर के हैं लोग, वो लोग जो है यहाँ के कल्चर को उस तरीके से नहीं जानते हैं. तो हमको कंटेंट क्रिएटर के तौर पर हम
उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसको प्रमोट करते हैं और वहाँ के कल्चर को, वहाँ के फूड को, वहाँ के हेरिटेज प्लेस को बताते हैं कि यहाँ पे ये सुविधा है, ये चेंजेस हुआ है, इस टाइप से। आशुतोष जी, मैं चाहूँगा आप भी कुछ उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अनमोल जी ने बताया, क्या आपने एक्सपीरियंस किया कुछ, अगर आप अपने 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 कंटेंट में आपने क्या पाया, क्या चीज़ आपको अनोखी लगी? जैसे अभी एग्जांपल ही लेता हूँ, जैसे मैंने भी रिसेंटली अपने एक पेज पे सीरीज़ चला रहा हूँ, कुछ मंदिर के कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं विजिट किया था लखनऊ से अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स के आसपास एक प्लेस पड़ती है, भवरेश्वर करके मंदिर है, वो निगोहा में पड़ता है। तो वो भी मतलब एक तरीके से एक्सप्लोर्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे वहाँ पे देख के लगता है कि कुछ चीज़ें सही से मेंटेन या कुछ वैसी चीज़ें नहीं है। तो कोशिश रहती है कि हाँ मतलब उन चीज़ों को हम दिखाएं अपनी रील्स के थ्रू, और मतलब लोगों को बताएं, इन्फॉर्मेशन के साथ बताएं कि मतलब ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो लोग उससे कनेक्ट भी करेंगे, नई जनरेशन एटलीस्ट कनेक्ट करेगी, हमारे रूट्स यहाँ से भी आते हैं, पहले वो चली आ रही है। तो ये नहीं कि खाली वो पहले के ज़माने में लोग थे वो सिर्फ दर्शन करके चले गए, आगे लोग नहीं आ रहे। तो अगर वहाँ जो नई जनरेशन जाएगी वो भी उससे कनेक्ट करेगी, वहाँ जुड़ेगी, और उसके इर्द गिर्द और भी तमाम चीज़ें, पूरी इकॉनमी खड़ी होगी जिसमें टूरिज़्म और भी चीज़ों का बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। मतलब रनीता जी, क्योंकि आपका और मेरा अयोध्या फैज़ाबाद का एक नाता निकल आया, तो मैं आप लोगों को सभी को आमंत्रित करता हूँ। मेरा जो पुश्तैनी आवास है अयोध्या में, 165 साल पुरानी संस्कृत पाठशाला, जिसके पहले अध्यापक आपको पता है कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। संस्कृत की पाठशाला है। मैं आप लोगों को सबको आमंत्रित करता हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप वहाँ जा करके, वो अभी भी चल रही है वो पाठशाला, तो आप वहाँ जाएं। अगर आपको लगता है कि ये इस प्रदेश की हेरिटेज और कल्चर को आगे ले जाने में आप लोगों को कुछ कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहता हूँ कि कल्चर को आगे ले जाने के लिए आपने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या पाया उत्तर प्रदेश के? मुझे इंडिया वापस आए अभी 5 साल ही हुए हैं। सुनने में लगता है बहुत साल हो गए, बट ऐसे लगता है 5 साल ऐसे बीत गए। बट मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मैं अभी भी हर साल, मेरा फिक्स्ड है, फैज़ाबाद में एक स्कूल है जिंगल बेल्स, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्हीं का है, पर ऐसे कई स्कूल्स हैं छोटे छोटे गांव में भी हैं जहां मैं जाती हूं ट्रेनिंग्स करने, एंड स्पेसिफिकली फॉर विमेन टीचर्स। आई हेल्प देम लर्न अबाउट लाइफ स्किल्स एंड आर्ट एंड कल्चर बाय यूजिंग थिएटर टेक्निक्स। तो ये मेरा एक तरीका है पे बैक करने का, या मेरी उसमें कोई ऐसी कोई खास कमाई भी नहीं होती कि मुझे बहुत बड़ा कुछ मिल रहा हो या कुछ, बट ये मेरे दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए, आई लव डूइंग दिस एंड दैट इज़ माई वे ऑफ गिविंग इट बैक। बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करना, उनको अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताना और सिखाना, सो दैट इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक। शौर्य जी, मुझे ये बताइए कि हर चीज़ पैशन के चलते आप करें ये ज़रूरी है, लेकिन पैशन के साथ साथ अगर उसमें पैसा ना हो या कमाई ना हो, तो फिर वो पैशन कुछ टाइम बाद फिर ज़रा धूमिल पड़ने लगता है या दिक्कत होने लगती है। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे सुनिश्चित किया जाए? सर, सबसे पहले इसमें आपको फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आपको जो है बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि वो एक तरह से वो प्रेशर डालते हैं कि इनकम नहीं हो रही है। सबसे मेन तो आपके लिए मेन वही है। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, ये सबसे मेन है। बाकी अपना पैशन, जैसे मैंने भी प्राइवेट जॉब करी है, ठीक है, अगर आपने लखनऊ में श्रीराम टावर आप जानते होंगे, तो मैं वहाँ पे जॉब करा हूँ गणपति में, ठीक है। तो उसके बाद जो लोग यहाँ वैसे सब लखनऊ वाले ही हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का हब श्रीराम टावर माना जाता है, बिजली वाली शक्ति भवन के एकदम जस्ट बगल में ही है। तो मैंने वहाँ पे जॉब करी है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए मेरे 12 घंटे की जॉब होती है, ठीक है। मैं गया हूँ उस पर, अगर ट्रेनिंग है तो भी सुबह मेरी ट्रेनिंग के साथ साथ वापस सीधे स्टोर पे ही जाना है, घर नहीं आना है। तो उसके लिए भी मुझे बहुत वो चीज़ होता था, कभी कभार ऑलमोस्ट टाइम 13 घंटे का चला ही जाता था। तो उसके हिसाब से देखा है बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा देखा अपना कि मैं क्या आगे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में आ गए। फिर देन थोड़ा बहुत जब लगा कि हाँ अब
वहाँ से हट के अब मैं यहाँ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने जॉब ड्रॉप कर दी। फिर मैं फुल टाइम प्रेजेंट टाइम में ट्रैवल और कंटेंट क्रिएशन पूरा इसी में है। मैंने भी अपनी फुल टाइम जॉब 2 साल पहले यही सोच करके छोड़ दी कि अब कुछ पैशन प्रोजेक्ट करेंगे और पैसा ऐसा कमा ही लेंगे, कोई तो ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। एक बार वो गोता लगाना ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये आज के इस डिजिटल युग में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनमोल जी, यही बेस्ट समय भी है, कूद पड़ो। और कल्चर से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, संस्कृति से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यूपी काफ़ी रिच है इन चीज़ों में, ठीक है। इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो ऑलरेडी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो यूपी से तो ऑलरेडी इस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। मौर्य जी, आपका अनुभव? ये जो पैसा वर्सेस पैशन की जो लड़ाई होती है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और इसमें सरकार क्या भूमिका निभा रही है और क्या निभानी चाहिए आगे, जिससे और बढ़ावा मिले संस्कृति को आगे ले जाने के लिए? संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ODOP स्कीम चलाई गई है, जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसको पहले मिडलमैन जो होता था वो पैसे ज़्यादा उसमें चला जाता था, जिससे आर्टिस्ट को, क्राफ्टमैन को पेमेंट उस तरीके से नहीं मिल पाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब जो है डायरेक्ट उसको पेमेंट मिलता है और वो नेक्स्ट देश विदेश तक भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उसको आगे तक भेज सकते हैं। आपको लगता है आशुतोष जी कि एक कंटेंट क्रिएशन पॉलिसी जो ऑलरेडी है उत्तर प्रदेश में, और उसको और आगे बेहतर बनाने के लिए अगर कदम उठाया जाएगा तो आप और ज़्यादा ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पाएंगे जो संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में और मुखर होकर के बोलेंगे? हाँ नहीं, डेफिनेटली वो तो ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा मतलब अलग अलग ज़िले से कह सकते हैं, छोटे छोटे जगहों से निकल के कंटेंट क्रिएटर आएंगे, तो वो और ज़्यादा अपनी अपनी स्टोरीज़ को लेकर के सब तक फैलाएंगे, आप आगे स्प्रेड करेंगे। तो गवर्नमेंट कर रही है, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है, कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, और वही है कि मतलब पैशन है तो कर रहा है, हम भी कर रहे हैं वही चीज़ है, और उसमें वो मेंटेन करते हैं उसको, बैलेंस को कहा जाए एक तरीके से। रेनिता जी, अब अगला क्या? ऑडिशंस ऑडिशंस और ऑडिशंस। बहुत खूब। शौर्य, अगला हम क्या देख सकते हैं आपकी रील्स में, आपके कंटेंट में? क्या चीज़ दिमाग में चल रही है? कोई एक ऐसी चीज़ जो ये मैं बनाऊंगा, ये ज़रा थोड़ा सा सोचूं इसके बारे में, ये करना है। सर एक्चुअली मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, पूरी सीरीज़ है जिसमें ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पूरा लखनऊ कवर है। हाँ, तो अब उसके लिए तैयारी मैं कर रहा हूँ, जिसमें उसकी पूरी डे बाय डे की जो लोकल मार्केट होती है उससे भी कहीं ना कहीं रिलेट है। बाकी जो देखा जाए अपना कल्चर का है, हमारे क्या अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी कुछ समय पहले की बात है जो कि मैं सोच रहा था बनाने के लिए, जिसको बोन कार्विंग हमारे क्या होती है, तो उस चीज़ को भी मैं उसको हाईलाइट करने का थोड़ा सोचता हूँ। ऑलरेडी हाईलाइटेड है, लेकिन क्या है, आदमी देखने के साथ उसको उसमें भूल जाता है, लेकिन फिर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके उनकी डिटेलिंग सारी चीज़ें, तो ऐसे ही मैं क्रिएट करना चाहता हूँ आगे। आप लोग सब लखनऊ वाले कोलैबोरेट क्यों नहीं कर लेते हैं? माइक्रो ड्रामा आजकल इतना सक्सेसफुल है, मतलब पूरी सीरीज सुनीता जी 90 सेकंड में एक एपिसोड खत्म हो रहा है, और 100 एपिसोड लोग यूं देख जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक माइक्रो ड्रामा, उसकी कोशिश यहीं लखनऊ में, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मिलके कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है सर। और ऑलरेडी हम लोग पहले भी कोलैब्स कर चुके हैं, मतलब कई तरह के, या जैसे अभी जो आप पूछ रहे थे कि आप आगे क्या सोच रहे हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ एक चाइनीज़ मंजे का बड़ा दिक्कत वो चल रहा है। बिल्कुल। तो मैं उस पर कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ कि एक सोशल मैसेज एक अच्छा जाएगा कि काफ़ी, क्योंकि न्यूज़ पे तो बात हुई, बट किसी कंटेंट क्रिएटर ने आकर के ऐसा वो नहीं किया कि मतलब किसी स्टोरी के ज़रिए कि आपका शौक़ या आपका जो एक जीतने का नशा वो किसी की जान से ज़्यादा बढ़ के है क्या। बहुत खूब। और कितना इम्पोर्टेंट मैसेज होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना रेडली वो अवेलेबल होता है, उसको रोकने का भी प्रयास है। खैर, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।
Thank you very much, and it is the time to felicitate. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for this discussion. क्योंकि उत्तर प्रदेश के कल्चर को समझना इतना आसान नहीं है, बट इस सेशन से मुझे लगता है कि इंसाइटफुल जोरदार तालियां for all the guests. Give a huge round of applause for all the content creators. I know अब लंच का टाइम हो गया है, बट थोड़ा सा अप्रिसिएशन आप दे सकते हैं. एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ. आई नो भूख लग रही है, बट थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो बनता है ना. थैंक यू वेरी मच. एंड एज वी मूव टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ UP Transformation Dialogues, I extend, on the behalf of Times of India, I extend my heartfelt gratitude towards all the speakers, all the dignitaries, and all the guests present here. Thank you very much for being with us. It was a lovely day, lovely conversations with you all. So this is me, Bhavna Sharma, signing off for today. Thank you very much for being with us. Thank you.